10 Techneev program. As we know, Ministry of Science and Technology, in which DST, DBT, and CSIR, in collaboration with Ministry of Earth Sciences, plan to highlight the impact of science, technology, and innovation in creating social equity and inclusion by organizing a virtual program, Techneev program, on the special occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Before starting day 10 Techneev program, I would like share to some glimpse of day 9 Techneev program. Yeah. This day 9 Techneev program was the National Innovation Foundation special program, which is held on 11th March. NIF play a very important role in scouting, developing and protecting the grassroots innovations. And in past session, we had first technology cotton wick machine. कॉटन विक मशीन को डेवलप किया था दीपक भाई और विजय भाई ने. एनआईएफ के फुल सपोर्ट से इन्होंने 5 ईयर में इस मशीन को कमर्शियल लेवल तक लेके आए थे. करंट सिनेरियो में इन्होंने अभी 10,000 मशीन तक इन्होंने मार्केट में बेची है. उसके बाद इन्होंने खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, जिसमें 6,000 महिलाओं को इन्होंने रोजगार दिया है. उसके बाद जो कि सारे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं. और दिस सक्सेस स्टोरी इन गुजरात रूरल एरिया इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ women can be trained and employed for a better life. माफ कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है. वी विल स्टार्ट सून. महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि कैसे उनकी सोशल लाइफ पर साइंस एंड इंटरवेंशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी सोशल लाइफ, सोशल स्टेटस बढ़ा है, इनकम जनरेट हुई है. तो उन्होंने इस तरह से हमारे साथ शेयर किया था. और जो महिलाएं इन मशीन्स को खरीद नहीं पा रही थी, उनको गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी फंड प्रोवाइड भी कर रहे थे, ताकि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सके. उसके बाद हमारे पास थी टेक्नोलॉजी सेकंड एंड थर्ड, जो कि थी काउ डंग पॉट मेकिंग मशीन एंड बैम्बो स्प्लिट मेकिंग मशीन. उनको डेवलप किया था मिस्टर परेश पांचाल ने. मिस्टर परेश पांचाल ने बहुत सारे ग्रास रूट इनोवेशन पे काम किया था, जिनमें से बैम्बू स्टिक मशीन और काउ डंग पॉट मशीन सबसे बेस्ट रही थी रूरल एरियाज में. बैम्बू स्टिक मशीन उन्होंने देखा कि जो महिलाएं हैं वो 3 किलो तक ही बैम्बू स्टिक बना पा रही थी.
तो इस इनोवेशन की वजह से वो 30 किलो से लेके 80 किलो तक बैम्बू स्टिक बना रही थी, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ी है, इनकम जनरेट हुआ है। उसके बाद उनकी जो सेकंड इनोवेशन थी काउ डंग पॉट मशीन, ये इन्होंने मेनली गौशालाओं में इम्प्लांट किया था, ताकि जो काउ डंग वेस्ट है वो वेस्ट ना रहे और उससे सेकेंडरी इनकम भी जनरेट हो सके। उसके बाद जो बैम्बू स्टिक मशीन के बेनिफिशरीज थे वो महिलाएं थी, जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करती थी। जब उनसे बात की तो हमें पता चला कि इस तरह से ग्रास रूट लेवल तक टेक्नोलॉजी का उनके सोशल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद जो उनकी दूसरी टेक्नोलॉजी थी काउडंग पॉट मेकिंग मशीन, उनको करेक्शन होम में इम्प्लांट किया गया। पहला धर्मशाला में इम्प्लांट किया गया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एनआईएफ की पहल से उन्होंने करेक्शन होम में इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लांट किया, जिसकी वजह से जो करेक्शन होम में प्रिजनर्स से से उनकी लाइफ के अमाउंट टेंशन कम हो गई, उनकी मेंटल हेल्थ थी वो सुधरने लग गई, इनकम जनरेट होने लगी। और उसके बाद आफ्टर रिलीज जो उनका सोशल री इंटीग्रेशन था वो काफी इंक्रीज हुआ है। एंड दिस इज द ट्रू एग्जाम्पल of to establish a model of inclusive development in correction homes. अब डे 10 के लिए आई लीव द सेशन टू महेश सर. महेश सर, कैन यू हेयर मी? Yes, yeah. Thank you, Dr. Manisha, for giving an overview, in fact, a recap of what happened during the 9th edition of Techneev at the rate of 75. So, as Dr. Manisha said, this is the 10th edition, and good afternoon and welcome to all of you to this, I would say, small landmark that it is. So there are 24 days to complete this, 25 days actually to complete this program, and today is the 10th day or the 10th edition, what we can call. And the video recordings of all the earlier editions are available on the website www.indiascienceandtechnology.gov.in/technew75/live. It's a very long URL, but then to make it easier, just search for Techneev at the rate of 75. Do a Google search, and you will find your way to the website easily. So today the theme is energy access for a prosperous society, and we have three technologies to take up today. The first one is on energy efficient Jaggery furnaces, and the second one is on science and technology interventions in traditional water mills, and the third one is on mountain solar water heating system. And as Dr. Manisha said, I am G. Mahesh. I am a senior principal scientist at the Council of Scientific and Industrial Research, or CSIR. And I'll be moderating this first session on energy efficient Jaggery furnaces, and the other two topics will be coordinated by Dr. Abhishek Mehta of the Department of Biotechnology and Mr. Prabhat Ranjan of the Department of Science and Technology. So each of these sessions, it's of 1 hour each. So we have about 45 minutes left in this session on energy efficient Jaggery furnaces. Now, all of us are aware of Jaggery, isn't it? I mean, so the cane sugar, it is called good in Hindi, vellam in Tamil, sharkara in Malayalam, some of the terminologies I know. And we use this in a variety of sweet dishes, and even dig into it as it is. And of course, we shall not be talking about Jaggery or the dishes made out of it, or the health benefits of Jaggery. So that's not the focus. We will be focusing on the technology and or I should say, the improvements in the technology behind making of Jaggery, and how these technologies have, or the technology improvements have helped the end users.
So to discuss these with us, we have Dr. Kalpana Arora and Dr. D. Raghunandan of the Center for Technology and Development in New Delhi. And हमारे साथ है Dr. Shri Devender Pahalwanji, who belongs to the sugarcane farmers group in Muzaffarnagar in UP. I shall very briefly introduce our three guests today. So Dr. Kalpana Arora, she is a program lead and an active researcher with the Center for Technology and Development of the Society for Economic and Social Studies based in New Delhi. She holds a doctorate from the Center for Rural Development and Appropriate Technology from the Indian Institute of Technology, Delhi. And she held an Erasmus Mundus fellowship for a year at the University of Bologna in Italy. She has worked in more than 15 national and international projects related to climate change, biogas production, biomass conversion and utilization, development of technology for pro-poor enterprises, training and technology dissemination, and so on. She has been honored as a fellow of Women Entrepreneurship and Empowerment Program at IIT Delhi. So, welcome, Dr. Kalpana Arora, to this Techneev at the rate of 75 program. And we also have Dr. D. Raghunandan, who is the founder director of the Center for Technology and Development. And he's a postgraduate in mechanical engineering from London University, and he's an MPhil in sociology from the Jawaharlal Nehru University in New Delhi. His work experience includes aero engine design at Rolls-Royce UK and HAL Bangalore. And as founder editor of the Center for Technology and Development, he has led the center's efforts in system development, system design development, and deployment of holistic technology packages and field models for poor livelihood and rural enterprises in different technology sectors such as leather, pottery, horticultural processing, blacksmith, and non-edible oils. And his CV is very long, and he's also a popular science writer, writing on various issues of science and technology, and science and scientific temper, and as well as numerous influential. He has numerous influential and academic and popular writings on climate change, both internationally and, of course, in India. And as I said, we have Shri Devender Pahalwanji, who is a resident of the village Jansat in Nagar, and he is a sugarcane farmer and also a farmer leader of the village, and associated with various groups that looks at the both areas of farmer welfare and farmer rights. And I should add that Dr. Kalpana Arora is at ground zero. She's at Muzaffarnagar, as we can see on the screen. And yeah, with that introduction, let's jump into the topic. So I will start off by requesting Dr. Kalpana, before we talk about the technology part of it, can you very briefly run us through this process of jaggery making? Maybe you and Devenderji there can just run us through very briefly, because there might be many viewers who are not aware about the process of jaggery making. So very briefly, right from the sugarcane to the process of good making, very briefly, can you tell us? Yeah, thank you, Mukeshji. So I'll first brief you about the project, and then Raghunandan sir will take charge and explain you the technology in detail. So yeah, before we talk about the technology and the background, can you tell us the process of jaggery making? As I said, there might be many viewers who may not be aware. So from sugarcane to the good making. So maybe, yeah, just tell us that.
Yeah, So, Dr. Raghunandan, I can see you raising your hand. Yeah, Do you I'll want do to- that. As part of my presentation, I will start with that. Huh? Okay, you have that. I will also. quickly explain it and then I can continue. So roughly, how much time do I take to explain the Sir, technology? we were planning to have this more as an interactive session based on how Yeah. it goes, So going about 10 between minutes, the three. Yeah, okay. Yeah. 10-15 minutes to explain the technology that will interact. Okay. Sure. So can I share it now with the screen? Okay, yeah. Can you see this now? Not yet. no. Upon my screen, screen share. Is that visible now? Not yet, sir. Not yet, sir. So you can share your entire desktop, so probably instead of window. Sorry, there is a symbol here saying open share tray. Is that the one I click? Yes, sir. You have to click that before sharing. Okay, I've clicked it. And then what? Now it is asking for which window you want to share. So that's my thing. Choose what to share. No, that's only showing the. I have my. Is that visible now? No. No, not yet, sir. I don't understand this. Where is the choose what to share? And it says entire screen, window, or Chrome tab. The entire screen, sir. Entire Sorry? screen. Sorry? The entire window. Entire screen, sir. Choose entire screen. Entire screen. Well, it's not showing, it's not sharing anything except the what is now on the screen right now. Me, that's the So PPT. you can open your presentation first and then start sharing. Sorry? Sir, open your presentation first and then start sharing. Yeah, it is open already. So you can It is mail it open to us. already. You can mail it to us or WhatsApp to us. We will open it from here otherwise. Okay. Okay, just a second. Who do I mail it to? To where I got the Techneev from? Yeah, the Techneev, to the same mail ID, sir. In the same mail ID. Okay. Sir, as you do that, maybe Dr. Kalpana, she was about to tell us about the CTD activities. Maybe she can start that. Yeah. Yeah, Dr. Kalpana, you can do that, please. So for jaggery making, first we have to extract the juice from sugarcane. So it's the sugarcane juice which is converted into jaggery basically, and then the sugarcane juice can be taken out, and the juice is heated over the pan continuously, and then it is started becoming dense, and some like you can remove the dirt from the top of the juice time to time, and then after that it will after like कितने घंटे में बन जाता है 8 से 10 घंटा लगता है कितने गुड़ में अच्छा it depends on the quantity basically. So depends on the quantity, you can fuel the furnace, and when it started becoming dense, and you can after that you can put it to for clarifying, and after that after clarifying it becomes dense and can be so dense so that you can cut into the pieces, and you can then that's how the jaggery sugarcane juice can be converted into jaggery, and these Yes. jaggery pieces you can So the process appears to be very simple. So you harvest the sugarcane is crushed, the juice is collected, and then it is heated
So I Steam think and this continuously heated over the pan. so the Yeah. pan is a very important subsystem of the So steam and continuously heated over the pan. So okay, something is on. If other than Dr. Kalpana's mic, others can turn off their mic, will be helpful. There's an other than Dr. Maninder, please check your mic. There is some disturbance over. And then Dr. Nidhi also, please turn off your mic. Yeah, okay, now it has stopped. So we were saying, the furnace is something that that of course applies the heat for converting the juice into the jaggery, right? So I think that is where the technology comes in, isn't it? Because it's very energy consuming process. So like we have got some chance to redesign the furnaces so that the process can be little energy efficient. So and I think we can also tell our viewers, when we talk about the pan that you're talking about, so we are talking about these pans which are of massive sizes. From I understood, for example, you must have got my presentation by now. Yes, sir, we have received it. So if you just share the screen, I can go through it very quickly. The presentations, and after the presentation is over, while you are talking to Mr. Bell, I am sitting at the jaggery furnace only, so I can show you how it is working. Yeah. Okay, I think the presentation has come up. Yeah, so Dr. Raghunandan, you can now start. Yeah, thank you. So next, please. So if you just look at the screen itself, you will see on the left the 3 pans, how the sugarcane juice is being heated. Then it gets transferred to the next pan and then to the final pan at lower temperatures. And finally, from the 3rd pan, once the jaggery is ready at the right consistency, it is transferred to an empty pan where it slowly solidifies, cools down, and then transferred into molds. And on the right side, you can see where there is a grinder in which the sugarcane is put and the juice is extracted. And what is left behind is called bagasse. That is then spread out on the field and dried. And that is the fuel used in these pans. Now, in this process, the bagasse gets used up in heating this. And it's a fair quantity of bagasse. And what we therefore did was to redesign this furnace to give you better fuel efficiency. Next, please. Next. Next, please. Yeah. So as I said, this is the problem we tackled. How to do this? We took this up under a DST project between 2007 and 9. And based on the success of that project, we have installed about 77 or 78 such furnaces in Meerut, Muzaffarnagar, etc. areas of West UP, starting from Pelwanji's furnace. And this was under the UNDP GEF small grants program around 2014 to 17. Next, please. Yeah. So this diagram here shows you superimposed the traditional one, as well as if you press the animation arrow, you will get the other picture also, I think. No, the previous one, please. Previous one. Previous one. Yeah. Okay. So now what you can see here is this yellow line shows you the older furnace, which is just a sloping hole in the mud and the 3 pans sitting on top. This is an entire mud construction with the chimney at the end. In this, I think if you press a down arrow, you will get the animated next diagram should come also supervised. If it doesn't matter. No, previous one. Yeah. So what we have done is to redesign the internal in order to
streamline the flow of the hot gases. This improves the heat transfer and extracts more heat from the burning bagasse than the traditional furnace does. The next graph will clarify. So if you can see here, what this shows is a comparison between the traditional furnace. The temperature is shown in yellow, where under the fire about 950 in the traditional furnace, 950 Celsius, and in the improved furnace is more or less the same, because that's where the firing is being done. But if you see the second furnace, in the traditional you have a temperature of 820 Celsius. In ours you have about 560. Lower temperature, but achieving the same goal. Lower temperature means you've used less fuel. And like that, you will see successively till you reach the end. At the top of the chimney in the traditional furnace, you have temperature of about 430 Celsius. That's very high. In our improved furnace, the final temperature is about 300. So reduction of about 150 degree Celsius, which means that much heat you have stopped and kept inside the furnace and not allowed to escape. And you have used that for extra heat to heat up the jaggery more efficiently. So in one day, while a traditional jaggery furnace operator would have performed 11 or 12 operations successively of removing jaggery, getting more juice, heating it up, removing more jaggery, about 12 batches of jaggery, in our system he would have achieved 16 or so such operations because of the increased efficiency of the operations. Next. Yeah, so the comparative fuel efficiency can be measured by how much fuel is now used to produce how much jaggery. And in our system, it shows that we are using less fuel, the yellow graph, in order to produce the same amount of jaggery compared to the traditional one, where you can see the figure is much higher. You're using about 195 kilos, whereas in ours you're using only 160 kilos. That's an improvement in the fuel efficiency by about 22%. That is the internal design. Now, next please. Now the next photograph shows you, you won't be able to see this when Pehlwanji explains because this is now been covered. But during construction, we wanted to show you how it's made. Earlier, it was just a mud construction. We have prepared walls with bricks and made 3 seating for the pan to sit on. The pans are about almost 7-8 feet in diameter, big cast iron pans. They sit on top of that. The final row of bricks inside this and in the 3 pans are insulating bricks, and the bottom of the floor is painted with insulating paint. And that's the chimney whose geometry again is redesigned. So this is a completely new type of structure which will also last longer. But what we have done is to use the same pan which the operator has been using earlier, so that he does not have to spend money in buying new pans, etc. Uses the same pan, only the furnace has been constructed again. Next, please. Yeah, so this shows you more detail of how these brick seatings are arranged. This shows you how the pans are kept on top of the bricks. And finally, you can see here the jaggery has come out of the molds and are lying in the thing and setting and drying for sale from the unit. Next. So when we went to the field, this was the standard 3-pan system which is used, but we also encountered many other innovations which people had made on their own. Somebody had made a 4-pan system, thinking if I put 4 pans in a row, I will get more. It looked to that farmer that he's getting more, but actually he's using more fuel. So if you did the calculation,
you will see that he is actually spending more fuel to get that. Pelwanji has maintained figures of how much fuel he uses for how much thing. That is the most optimum. We are getting 20 to 22% improvement in fuel efficiency. There are these 4-pan systems. We have done that, but it will give you only around 12 to 15% improvement in efficiency, especially because many farmers are not using bagasse. They use old paper, old cloth, rubber, plastic, whatever as fuel. If you do all that, again, your fuel efficiency will come down to about 12% or so. The total cost of this system to the operator in constructing this new system is about 75,000 rupees, which the operator recovers in the first year itself. Next slide, please. Yeah, so these are the quantified impacts, the benefits to the farmers. You can see that the farmer is saving about 35 tons of bagasse every year, which translates, the bagasse is sold to local cardboard makers, paper makers, such units. They come to the jaggery unit and buy the bagasse. So this is extra bagasse saved, which translates into about 1 lakh per year, including time saved, etc., etc. So the jaggery unit owner recovers the cost of the furnace within 1 year itself. And we have just done a production for 50 units, which was the original target set by UNDP. We had done 75 of how much savings is generated per year through that program. Below, next to that, we have shown how much carbon dioxide is saved in that unit, and you'll see that over a 10-year life per furnace, we are saving about 26 kilotons of carbon dioxide from this, which is a large saving in CO2 emissions from the perspective of climate change. Next, please. So that's the presentation, and any question, answer, I'm ready to answer, as well as when you want to see the unit, Kalpana is there, Pelwanji hai wahan pe, to wo aapko actual unit dikha denge. That's up to you to whether people want to ask me questions or you want to see the unit first, and pehle wo dekhna chahenge, wo aap decide kar le. Yeah, thank you, sir, for the for giving the technical inputs that your center has. I should say the intervention that has been given to the jaggery making units. So what we understand is there are 2 levels. One is at the design level, and other is at the construction level. At 2 levels, there have been improvements that have been made. So for a moment, I will go over to Pelwanji here. Pelwanji, आपके वहाँ पर जो ये फर्नेसेस है, इसमें कुछ हो सकते हैं कि नए जो बने हैं ये नए टेक्नोलॉजी के साथ बने हैं, और जो कुछ पुराने जो थे वो उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाया गया, कुछ चेंजेस जो सीटीडी ने जो किए हैं वो लाया गया होगा. तो इसमें कितने जो पुराने हैं उसको मॉडिफाई करके इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, या पुराने वैसे के वैसे हैं या नए बन रहे हैं? तो इसके बारे में आप कुछ बताइए. पहली बात ये बताइए कि जो पुराने जो आपके वहां पर जितने भी पुराने फर्नेसेस थे उसमें से कितनों के इम्प्रूव किया गया, ये जो नया जो टेक्निक्स है, डिजाइन है, या तो कितनों को चेंज किया गया? जो पुराने थे वे कम से कम होंगे 65-70 के आसपास होंगे जो सही करे गए, और जो नए बने वे भी 2-4 हैं. कुछ अब उनमें बंद हो गए, कुछ और बंद क्यों हो गए? बंद न हो गए. कुछ तो सरकार की जो वो है, ये प्रदूषण वाले ईरान करे आगे, इन्हें पैसे चाहिए, ये बता दें भट्टी उसके अनुरूप नहीं है, यहाँ उनको बस्ती आ गई, फलाना आ गया. और कुछ जो नवे भी बन रहे उनमें पन्नी भी झुकवा रहे हैं, पैसे ले लेंगे. तो जब किसान तंग आ जाएगा, आमदनी तो इसमें इतनी रही नहीं,
Dr. Raghu and Dr. Kalpana, so he mentioned that point about the pollution. From what you said, we have seen that the pollution levels have come down with this new design and the construction that is being followed in the new. So is there still a concern about the pollution that he just said? Yeah. See, the concern as far as in fact, I had said this in my slide also. Pollution Control Board has expressed concern about the pollution because we are burning biomass. Yeah. Okay. So we have told the Pollution Board we have reduced how much biomass is being burnt by 25%. That means we have reduced the pollution by 25%. Yeah. So they have made some suggestion saying, why don't you raise the chimney to 25 feet or 30 feet? 10 meters precisely. Sorry? 10 meters of height. 10 meters. So roughly about 30 feet or so. So the point is, from a technical point of view, we didn't understand why 30 feet, why not 40 feet, why not 20 feet. So we have asked the Pollution Board to tell us at the end of the stack, tell us how much particulate matter you want to see. Then we will do the design accordingly, because the chimney height is also designed according to the chimney. It is not an arbitrary thing where you put a chimney for 30 feet because that will affect the whole flow. So we have said, you tell us at the end how much you want to see, 400 ppm, 200 ppm, 300 ppm. You give us a standard and we will modify the chimney or the geometry or whatever to meet that standard. Unfortunately, CPCB has not been able to provide any standard for this. So otherwise, you see, if they are thinking like, now the big debate is in Punjab and Haryana, they burn the agriculture residue. Now, there is no way to reduce that. You can only stop it. So tomorrow, the point is, if you stop the jaggery production by these farmers, you are going to affect the livelihoods of more than 10,000 families in this. And actually, if you look at pollution in any Delhi or Meerut or Ghaziabad or any scenario, biomass burning is less than 1% to 2% of total particulate matter pollution, that too only in 2 months of the year. So we are trying to convince the Pollution Board, keep this in perspective, give us a standard. We have already reduced pollution by 25%. We can reduce even more. You give us a standard by which you will measure it. But you know how this works with the official systems. There is also informal little, what do you say, official harassment going on at the field level. That happens. This thing, we are trying our best to deal with it in technical ways if we are given a technical problem to solve. Okay. So he also mentioned, that about 60 to 70 jaggery plants have been retrofitted with these technologies, if I can use the word retrofitted. So how much time does it take, to convert? And when you talk about retrofitting, is it only the modifications in the pans? I think when you talk about pans, I should also highlight essentially what we do is highlight to the viewers about the size of the pans, because of course the pans were visible in your photographs, but then to just give a sense to our listeners and viewers who may be very new to this. So the size of a pan, it's a very, very huge pan. For example, if you compare it with a dosa pan or a roti making pan, it's probably about 200 mm or 250 mm. Here the pan size is about 1500 mm. So these are huge pans that we are talking about. So when you talk about retrofitting, how much time does it take for the retrofitting, and what is the kind of retrofitting that is done to the furnace? So as I was describing earlier, and I showed you that picture also, essentially the traditional furnace is a pit dug in the ground with a sloping floor. So it starts at about maybe a 5 feet hole,
where the bagasse is put in and then narrows down to 3 to 4 feet and then slopes upward to the chimney. This is all made in mud. And on top, there is a mud is piled up and the pan is seated on top. Because there's so much mud piled on the side, it is able to take the weight of the pan. So when we go in there and retrofitting means, you lift the pan and keep it to one side. All the 3 pans you lift and take out. This mud structure is broken. And like you saw, we showed you those rings made of bricks. Those are made one after the other. And then again, mud is kept on the side. So from outside, if you see, it looks like the earlier one because you can't see the bricks which are inside. It looks the same. Dimensions are same. The pan is sitting on top. This whole process takes about 3 days to do. So that is it. It's not very much time. And are they trained for this? Can they do these things themselves? Can Pahalwanji and his associates do these themselves, or do they need? Normally, in each area, there is a particular mistri or a mason who does this work. जो मिस्त्री घर बनाते हैं वो ठीक है, पर कुछ मिस्त्री ऐसे होते हैं जो ये इसी काम को करते हैं. So the farmers will call that mistri to do this. So we have trained about 75 of these mistris to make the new furnace. So next time a new furnace has to be made, we don't need to be called, provided the mistri makes it to the proper dimensions. He knows all that, but if we go and help him a little bit, he can construct the furnace there according to the local thing. Only thing that needs to be provided to the mistri is the insulating bricks. बाकी तो ईंट है, ईंट तो वो ले लेगा, पर वो insulating bricks जो चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा. That we have to supply to them. So can you tell us a little more about these insulating bricks? What are these some special kinds of bricks which are coated with? They are refractive material. They are used making. They are made using different refractive materials with some ball clay, with some quartz, feldspar, etc. And these are normally used in all kinds of furnaces used in industry. Okay. Pottery furnaces, copper furnaces, any other furnace. So refractive bricks, there's a regular industry growing. It's not a new thing that has to be made. So we go to the industry and say, this is the size of the brick that we want, and they supply it to us without a problem. So let me go to Pahalwanji again. Pahalwanji, आपने बताया कि अभी जो प्रॉब्लम जो आपने बताया था वो था ये प्रदूषण के वजह से जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने जो इश्यू बताया, जो उसका जो समाधान भी डॉक्टर रघुनंदन ने अभी बताया. उसके अलावा आपको फायदे तो काफी हुआ है, जैसे हमें बताया गया. हाँ, जो पैसे की तरह से तो इसमें और क्या क्या जो पहले तो जो यहाँ भट्टी थी वे नाव के नमूना थे, फिर इन्होंने जो टेक्नोलॉजी से बनवाई उससे थोड़े ईंधन में ज्यादा गुड़ पकड़ा. रोज की तुम मान के चलो हमें 1000 की बचत हो रही ईंधन में, तो महीने में 30,000 की होगी. और कोल्लू चला 6 महीने, 36 18 2 लाख के करीब होगी. तो फायदा तो बहुत है, इनकी मेहनत का उसका मदद का फायदा तो है. लेकिन प्रदूषण विभाग जो है वो सब अपनी चला रहे, वो इनकी कोई नहीं मान रहे. उन्हें पैसे दे दो तो अभी क्या है, रघुनंदन जी ने पहलवान जी रघुनंदन जी ने एक बात बताया था कि इसमें जो बगास जो डालते हैं जलाने के लिए, उसके अलावा भी कुछ और ईंधन जो आप लोग यूज करते हैं उन्होंने बताया था. तो उसमें ऐसे क्यों बगास की कमी पड़ती है, वो रीजन है या आप नहीं करते पहलवान जी नहीं करते हैं, कई लोग और करते हैं क्योंकि वो थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं. वो थोड़ा प्लास्टिक भी मिल जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है, उसमें पैसे बचाने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली हिसाब लगाओ तो उनको नुकसान पड़ता है. फैक्ट्रियों में बेचते हैं. मान ले हमने पत्ती हमारे यहाँ मोल को है, गन्ने की पत्ता जो है पत्ती वो मोल को आई, वो मान लो हमने ली रोज की 3000 की,
और खोई बिकी हमारी 5,000 की, 2,000 का बेनिफिट हो गया। मान के चलो 20 मन गुड़ में, तो 2,000 की वो बचत होगी। और जो खेतों में वो पत्ती फूंक के प्रदूषण हो गया, वो प्रदूषण कम हो रहा। वो प्रदूषण तो नहीं हो रहा खेतों में, वो वहाँ कोल्लू में जल रही हो। और खोई से कम धुआं, कम प्रदूषण पत्ती में है। खोई में भी थोड़ा है, गन्ने की तो खोई है बगान, उसमें भी है प्रदूषण, लेकिन पत्ती में बिल्कुल नहीं है। So there is another area of the energy requirement other than the furnace. So we understand that even the crushing of the canes require is energy intensive, if I can use the phrase there. So have there been some technological improvements that have been done at the crushing of the sugar canes? Yeah. This is a very interesting issue, but since you've raised it, I'll explain. If you saw my opening slide, it showed you the crusher where the sugarcane was being crushed. And if you notice, the rollers are placed vertically. The rollers rotate vertically. Whereas if you go to your local market, jo ganna juice banata hai, it's all horizontal rollers. It's horizontal. Yeah. This dates back to the day when जो कोलू, इसे उसे कोलू कहते हैं, जो ये गन्ना निकालता है। और ये कोलू जो होता है, पुराने जमाने में बैल घूमता था, and it is a bullock driven system, whether it is used for crushing cane or crushing grain or making atta, whatever it is, तो उसे कोलू कहते हैं। तो ये कोलू जो है was driven by this bullock going around. So obviously, if it's going around, you have a wheel which rotates horizontally, and it's easier to drive vertically mounted rollers. Actually, mechanically inefficient. So we have designed a system with horizontal rollers. But there is a very funny provision in the UP Sugar Milling Act, under which local jaggery making units like Pelwanjis are not allowed to use horizontal rollers. They are only supposed to be used by the mill walas, while the artisan is supposed to use only the vertical roller, because the assumption is he is using animal driven machinery. This is totally a faulty law, but it is in place for more than 50 years, 60 years, and it only serves the purpose of ensuring that more sugarcane is crushed by the mills than by the artisan sector. There is no other logic to it. So we have done the innovation, we have got the machine, it is used in Madhya Pradesh, it is used in other states. UP mein allow nahi karte. But there have been improvements possible, and there are improvements possible. They have been done. We have done it even under this project, but unfortunately, you are not allowed to use it inside Uttar Pradesh. So, Dr. Kalpana, you are there on with Pelwanji there on site. Is it possible? I mean, to just show us the furnace there, the ones that you are. Yeah, I try to connect this link on my phone, and then I will go out and can show. So give me a second. If it can be easily, yeah. So while the visuals are coming up, so you at some point in time said that the bagas is sold, and the farmers make some money out of the bagas. So here you're implying that all the bagas is not required for the furnace. Is that correct? Yeah. Is that assumption correct? That's right. If you have the fuel efficient furnace, you save bagasse. Yeah. The more bagasse you save, the more money you have in cash, because you can sell that bagasse.
and it's also a good method to recycle the waste material instead of burning it. So the advantages are multifarious. I mean, there are several. One is, Yes. lowering Yes. of Yes. pollution, more That's right. That's right. production of jaggery. Then there is some income from Saving the of sale the of bagasse, the bagasse that you are saving. recycling that material. Yeah. Yeah. So So you have that's benefits on different fronts. Yeah, we can see you, Dr. Kalpana. We can see the background, but we can't hear you. Please turn on the mic. Yeah. So if you can see that, Yes. these are the furnaces. Yes. Maybe you can hold the mobile horizontally. Oops. So, sir, which is the more prevalent one these days? Is the 3-pan or the 4-pan furnaces that are more prevalent? 4-pan is just a spontaneous innovation which some local fellow has made. But 3-pan is the best, and it is more optimal. The most optimal utilization of the thing is 3-pan, as we are showing that. Yeah, I'm unable to use the reverse camera, so you can That's see. all right. That's all right. Yeah. Yeah, we can see the This pan. is first pan. Yeah. So this is basically used as a clarifying. And then this is the second one, which is being cooked. You can see the change in the color. Yes, yes, it's become darker. Is it visible? Yes, yes, yes. We can also see the if I should say I don't know, steam or the smoke coming from the pan. Yeah, and the change in color also. Yeah. Yeah, and you can see them. Oh yes, 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 yes. We can see the sweet jaggery. Yeah, and I can show you one more thing, because since he's a big farmer and need a huge crushing, so he has designed his own crusher for in a automated mode. Okay. So if you can see. We can see a belt moving there. A motor. Yes, So, yes. Yeah, we can see someone. So, with a hydraulic lifting system to collect the gas also. Yeah, yeah, we can see that. Yes. So this is how it is being crushed, and the juice is collected and then taken to the pan. We can see it clearly now. So this is obviously the vertical yeah, the vertical crusher there. Yeah, yeah, yeah. Yeah, thank you, Dr. Kalpana, for the visuals and for being there with Palwanji there, with the beneficiaries actually. So we are able to see the technological improvements. We have been able to see, we have been able to hear. पहलवान जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे? अगर इसमें और आपने प्रदूषण के बारे में तो बता दिया, और वो उसके अलावा जो कुछ और आपको इसमें एक्सपेक्टेशन है आपकी कि ये भी चीज हो सकती है? एक तो ये इसमें मान लो जैसा हम गुड़ बना रहे हैं, अब गुड़ की भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर सरकार से मदद मिले या आप लोगों से मिले तो इसमें अब यहाँ से जैसे खाने के गुड़ में जैसा कलाकंद के पीस बन रहे नहीं, ऐसी मशीन आ रही है। वो मशीन आ रही है, जैसा इसमें गुड़ पका दिया पैन में, कड़ाऊ में, और वो उसमें गिर दिया तो वो इसके छोटे छोटे पीस बना देगी और वो पैक होके जा रहा होटलों पर। वैसो कुछ शक्कर जैसा पूरा हो ऐसा इस पैन में से वो करा और उसमें गिर दिया वो शक्कर। वो ऐसे पैकिंग 100 ग्राम का, 200 का, 500 ग्राम का, ऐसा खाने में ना तो उसमें कोई आपको केमिकल है ना कोई इसमें मसाला है, और वो खाने में स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया है। चीनी से बहुत बढ़िया है। चीनी जो है शुगर वो तो नुकसान देगी, वो नहीं देगी। अगर वो मशीन मिल जाए, हमारे क्षेत्र में एक प्लांट लगा है वो किला, लेकिन वो
लाला लोग हैं, उन पे पैसा है, उन्होंने वो लगाया, उन पे चलान ही बंद हो गया। अगर हम किसान को मदद मिल जाए ऐसे स्कीम लेने की, तो फिर जो है और ऊंचे पे चला जाएगा ये उद्योग, बहुत प्रदूषण भी बहुत कम होगा और बढ़िया खाने को आपको लोगों को बहुत बढ़िया वो मिलेगा, ये कहना। So, Dr. Kalpana, so I think from what I understood from what you're saying is that you're talking about maybe if there is a possibility to have a machine which can, I don't know, what he said was make these Make the jaggery jaggery, into small finer jaggery pieces, bars and into pack. smaller pieces. Yeah, Yeah. yeah, and automatically, make Yeah, this automated small more jaggery to bars. do with Yeah. the post, production of Yes. jaggery. Sure. So he was Sure. talking about some, mechanical processes that Sure. can be had, some Sure. instruments that can be had. I think that was one thing he said. And did he say something else too? Maybe I didn't catch, or was it this the only thing he said? Yeah, he has said the few products, including like jaggery powder and like the small packings of jaggery powder, like in case of like sugars which are used in hotels and resorts, etc. So the small Okay. packings of jaggery powder. So one is, making this into pieces of Value-added whatever type. Look at that, yeah, value-added product. Yeah, yeah. So, And he was there- saying that one person who is quite rich has installed this kind of plant here, this kind of machinery here, but it's also get closed because Okay. he was unable to operate and get money out of it. So Yeah, so Dr. Raghunandan, so on a parting note, does this come under the remit of the Center for Yes, Technology yes. Development? Yeah, we can do that. Value-added products from jaggery, there are many in the market, and nowadays people are health conscious more than they were earlier. So there are some companies making some good value-added products. The problem only is that marketing those products is also a difficult job. You see, for somebody like our Pelwanji is there, a product तो बन सकता है, उसको तो आप market कैसे करोगे? That is a challenge, So many such units close because you're not able to. Then you have to approach a distributor. Then you have to approach the retailer, and then ऐसा तो नहीं है कि आपने बना दिया और अपने आप बिक गया. So there are challenges in all fronts, and we have to weigh the consequences. But as the beneficiaries want, we can address that demand. It's not a problem. So thank you so very much, Dr. Raghunandan. It was a very interesting and informative session that we had, where we not only understood the process of jaggery making, but also could understand the improvements that have been made by the CTD with respect to design changes and also with respect to the material and construction value additions there, which has helped in multifarious ways. Most importantly, helping the beneficiaries, the end users, the farmers there to increase their income, and also to, in a way, I would say some kind of health benefit, because it reduces the pollution and the several other benefits that we said. So thank you so very much, sir. And Dr. Kalpana, thank you so very much too, for actually traveling down to where you are, along with Pelwanji, and for taking us through, showing us the glimpses of that. And Pelwanji, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी जो सजेशंस देने के लिए. बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप और बहुत सारे लोग आपके क्षेत्र में वहां पर इस टेक्नोलॉजी का, इनका जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स का फायदा मिला है, और आपकी जो सहयोग के आप जो इनपुट्स देते हैं, उससे हमें भी जो और जो इनोवेशंस करने की इनपुट्स मिलेगी, उससे हम और भी चीजें कर सकते हैं. तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा. So I will stop here now. Thank you so very much. Thank you. Yeah, I will now. Thank you, Pelwanji. Dhanyawad. Kalpana, thank you. thank you, sir. Dhanyawad, Thank you, Pelwanji. Mahesh. Yeah. Yeah, thank you. Yeah, I will now invite Dr. Abhishek of the Department of Biotechnology to join for take over for the next session.
Yeah, Dr. Abhishek. Thank you, sir. So, the next session is for SNT intervention in traditional water mill. So, इस सेशन में क्योंकि हमारे जो साथ में टेक्नोलॉजी के जो डेवलपर्स और जो यूजर्स हैं वो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं हिंदी में ही यहाँ बात करूँगा। यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो वाटर मिल पंचक्की या घराट जिसे कहते हैं, उस घराट को किस तरीके से इसमें रिवाइव किया गया है और उसको एक कोशिश की गई है कि ये ज़्यादा मतलब यूज किया जा सके और लोगों के द्वारा, उसके ऊपर ये यहाँ पे एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की बात की गई है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है हेस्को के द्वारा। हेस्को जो कि हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। हेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उत्तरांचल में हमारे देहरादून में काम कर रही है और ये इकोलॉजिकल जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल से कैसे हम जो लोकल पीपल हैं उनके लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर ये सोसाइटी बहुत काम कर रही है। और हम इनके जो उनके जो फाउंडर हैं डॉक्टर अनिल जोशी, उनको काफी सब जानते ही हैं कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है और इस कारण वो सरकार से काफी पद्म भूषण वगैरह से सम्मानित भी हैं। ये हेस्को का एक और जो बहुत सारे प्रयास है उनमें से एक प्रयास रहा है इस पंचक्की को रिवाइव करने का। पंचक्की जैसा हम जानते हैं पहाड़ी इलाकों में, जैसे हमारे उत्तरांचल, हिमाचल और जो भी बाकी पहाड़ी इलाके हैं, इन सब में हमारे पास एक बहुत अच्छा जो एक रिसोर्स रहता है वो है बहता हुआ तेज पानी। और बहते हुए तेज पानी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम जो है इसकी पानी की ताकत से आराम से चक्कियों को चला सकते हैं, जहाँ अलग से हमें बिजली की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। और इन पंचक्कियों से या घराट जिसे हम कह रहे हैं, कई सालों से ये यूज किए जा रहे हैं। मगर समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारे पास पानी के स्रोत कम होते जा रहे हैं और इसके अंदर क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके कारण यहाँ पे बेनिफिट या हम जैसे कहें जो किसान का फायदा है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे भाई थे वो इस चीज को छोड़ के हट रहे हैं और घराट बंद होते जा रहे हैं। हेस्को के प्रयास से और हमारे यहाँ पे एक भाई जो हमारे साथ हैं हीरा लाल जी, इनके प्रयास से ये घराट फिर से रिवाइव होना शुरू हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्वागत करता हूँ हीरा लाल जी का, डॉक्टर हिमानी पुरोहित, जय सिंह पवार जी, मालती सेमवाल और चरण सिंह बोरा जी का। आप सबका आज यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हिमानी पुरोहित ये हेस्को की एक मेंबर है, 2000 से हेस्को से जुड़ी हुई है और तब से ही ये आपके जो कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी, उनके उत्थान के लिए काम कर रही हैं। डॉक्टर हिमानी पुरोहित इस जो घराट जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है उसमें काफी इनका योगदान रहा है। हीरा लाल जी ये एक डोकवाला गांव से हैं। ये 58 साल के हैं और इन्होंने मतलब ज्यादा एजुकेशन ना होने के बावजूद भी इन्होंने जो यहाँ पे काम किया है, जिस तरीके से इसको रिवाइव किया और लोगों को हेल्प की है, वो एक काबिले तारीफ चीज है। हीरा लाल जी इस वाटर मिल पे ही डिपेंडेंट है और यहीं पे काम भी करते हैं और इसकी मदद से आज के डेट में 20 से 25 हजार रुपये महीना कमा पा रहे हैं। इसके अलावा ये अपने जो सेवाएं हैं वो हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू में भी लोगों को दे रहे हैं। चंदन सिंह बोरा ये भी हेस्को से ट्रेनिंग पाए हुए हैं और इसके अलावा ये भी इस वाटर मिल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और इन्होंने हेस्को में यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद अब आज की डेट में ये और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ट्रेन कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा रहे हैं। जय सिंह पवार ये हमारे एक वाटर मिलर हैं जो कि हेस्को से इन्होंने ट्रेनिंग पाई और उसके बाद आज ये भी 20 से 25 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं। इसके अलावा 8 से 10 जो विलेजर्स हैं वो यहाँ पे मतलब इनके पास गांव से इनके पास लोग अपना आटा और बाकी चीज पिसवाने के लिए आ रहे हैं। ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी जो हमारी है वाटर मिल की, इसको किस तरीके से क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं और कैसे इसको इम्प्रूव किया गया है, इसके बारे में हमें बताएंगे डॉक्टर हिमानी पुरोहित। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हिमानी जी, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी सर, नमस्कार। सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण टॉपिक में आज, क्योंकि जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और जो समाज में जिन्होंने परिवर्तन किया उन लोगों को भी जोड़ा गया है। मैं पहले बता दूं सर, वाटर मिल है ये घराट के नाम से जाना जाता है।
और सर ये सेकंड सेंचुरी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और इसकी इम्पोर्टेंस का और इसकी सक्सेस का हम इसी बात से पता लगा सकते हैं कि ये आज हम 21 सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं और इसकी सस्टेनेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, लोग आज भी इससे अर्न कर रहे हैं। और सर ये फर्स्ट वाटर बेस्ड रूरल एंटरप्राइज था जो कि आज तक सस्टेन है। और अगर हम देश और दुनिया, नेशनल इंटरनेशनल कहीं की भी बात करें तो हिमालय रीजन में ये आज तक है और लोग इससे वाटर मिलर इससे फायदा उठा रहे हैं। इसमें सर जो सबसे बड़ा हेस्को का रोल था, एक्चुअली ये तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, तो हमने वाटर मिल अपग्रेडेशन को लेकर के काम शुरू किया, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारे वाटर मिलर्स थे उनका इंटरेस्ट वाटर मिल से घटता जा रहा था। तो फिर एक आया कि इतना गैप क्यों है, क्यों वाटर मिलर इससे इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, तो हेस्को ने फिर एक वाटर मिल को एक मूवमेंट के रूप में शुरू किया। और जो भी टेक्नोलॉजिकल गैप थे उसके भी कारण है, क्योंकि जो हमारे वाटर मिलर थे उनको लो आउटपुट उसमें मिल रहा था और उसका एक लिमिटेड फंक्शन था, जैसे वो सिर्फ ग्रेन ग्राइंडिंग के लिए यूज होता था। तो फार्मर को कहीं ना कहीं वाटर मिलर को लगता था कि एक ह्यूज स्ट्रक्चर खड़ा करके हम सिर्फ एक ही चीज का फायदा उससे उठा पा रहे हैं, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन हमें उससे मिल रही थी। तो हेस्को ने इस गैप को फिल करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और इसमें इन्होंने हेस्को ने 3 पॉइंट को ध्यान में रखा। एक तो जो टेक्नोलॉजी जो भी हम डेवलप करें ये इजी हैंडल्ड हो और लोकली रिपेयरेबल हो, क्योंकि ये हम वाटर मिलर के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। सेकंड पॉइंट हमने जो ध्यान रखा, स्किल मैचिंग होनी चाहिए, और तीसरा था अफोर्डेबिलिटी, जो लो कॉस्ट होना जरूरी है। इन तीनों चीजों को लेकर के जब हमने काम करा तो इनिशियली इसमें बॉल बियरिंग होती है जो कि वाटर मिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको रिप्लेस किया, और वाटर मिल की इफिशियंसी इसको रिप्लेस करते ही 3 टाइम ज्यादा बढ़ गई। जो ये इनोवेशन वो हिमालय रीजन में जब ये इनोवेशन शुरू हुआ तो इसकी ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह था, और मिलर्स की इसकी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ती चली गई। जो सेकंड इसमें हमने इनोवेशन किया और टरबाइन को लेकर कर किया, क्योंकि टरबाइन एक मेन फंक्शन होता है वाटर मिल में। जो ट्रेडिशनली वुडन टरबाइन हुआ करती थी उसको लोग यूज करते थे मिलर्स, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, जैसे इफिशियंसी बहुत लो थी, हाइजीन का वहां पे एक प्रॉब्लम था, मेंटेनेंस बहुत हाई थी, और जैसे कि हमारे जितने आर्टिजन है वो भी धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे थे, तो क्योंकि वो वुडन टरबाइन थी उसको एक आर्टिजन ही तैयार कर सकता था, तो एक हमारे पास ये डिसएडवांटेज था। हेस्को ने लोकल कम्युनिटी और लोकल फैब्रिकेटर्स की हेल्प से इसको मेटेलिक टरबाइन, जिससे को माइल्ड स्टील है उससे टरबाइन डेवलप करी, जिससे इसकी इफिशियंसी इंप्रूव हुई। साथ ही ये मल्टी एप्लीकेशन लाइक ग्राइंडिंग, पावर जनरेशन, ऑयल एक्सपेलिंग, कॉटन कॉम्बिंग, डीहस्किंग, इतनी सारी एप्लीकेशन हमें घराट से अवेलेबल होने लगी। इससे मिलर्स की एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी और मिलर्स की इसकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो ये एक इससे वाटर मिलर्स ने अपना एक वाटर मिल एसोसिएशन भी बना दिया हर हेड के लिए, क्योंकि हर जगह वाटर की डिस्चार्ज एक सा नहीं होता है, कहीं लो होता है, कहीं मीडियम होता है, कहीं हाई होता है, हेड वाइज अलग अलग होता है। तो हर हेड के लिए अलग अलग टरबाइन बनाएगी, जैसे अगर कहीं पे हाई हेड है, लो डिस्चार्ज है, उसके लिए कप रनर डिजाइन किया गया, हाई डिस्चार्ज है, लो हेड है, उसके लिए स्पाइरल रनर डिजाइन किया गया, अगर मीडियम डिस्चार्ज है और मीडियम हेड हो तो उसके लिए सिंपल रनर हम लोगों के द्वारा तैयार किया। आज अगर हम सिर्फ वाटर मिल की ही बात करें तो मोर देन 5000 विलेजेस में हम टेक्नोलॉजी वाइज, वाटर मिल अपग्रेडेशन वाइज, जितनी भी पुरानी हमारी वाटर मिल थी उनको हमने अपग्रेड किया, तो 5000 से ज्यादा जगह पे अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और क्योंकि आज हमारे साथ हमारे 2 ऐसे फार्मर्स जुड़े हुए हैं, एक जो हमारे साथ 90 से जुड़े हैं, 94 95 से, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंडफादर सब यही काम करते चले आ रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा पता है, जो हीरा लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कि किस तरीके पहले उनको फेस करने पड़ते थे चैलेंजेस, और आज कितनी उन लोगों पे उनके आर्थिकी पे बढ़ोतरी हुई है। और दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मालदेवता से पवार जी। पवार जी ने वाटर मिल के साथ साथ अपनी ही वाटर मिल में एक मिल मॉल भी स्टैब्लिश किया, जिसमें जितने भी एग्रो प्रोसेसिंग, जितने भी प्रोडक्ट को वैल्यू एड करके वहां तैयार करते हैं उसके माध्यम से बेचते हैं। और सिर्फ अपने लिए नहीं, जो चारों तरफ एसएचजी ग्रुप है, जो महिलाएं जुड़ी हैं, जो भी वैल्यू ऐड करके जो भी लोकल प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके लिए भी एक मार्केट अपने मिल मॉल के द्वारा उन्होंने प्रोवाइड करवाया। थैंक यू सर। थैंक यू हिमानी जी, आपने हमें अभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया किस तरीके से एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी जो पहले सिर्फ एक आटा पीसने के लिए यूज होती थी, उसको अब आपने और कई चीजों से जोड़ के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद बनाया है।
मैं अब यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हीरा जी को, नहीं सॉरी, हीरा जी से पहले जयसिंह पवार जी, जयसिंह पवार जी अपने यहाँ पे कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे और अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार जी, हाँ जी सुन रहे हैं हम आपको। मेरा नाम मालती सेमवाल है और मैं हस्को से जुड़ी हूँ। हम लोग अभी यहाँ पर मालदेवता में हैं और हम लोगों का ये यहाँ पे घराट जो चल रहा है ये अंग्रेजों के टाइम से घराट चल रहा था, पर अभी ये जो घराट है वो सिंचाई विभाग के पास था, पर 12-13 साल से ये घराट बंद पड़ा था, जिसे हेस्को की तकनीकी का यूज करके जयसिंह पवार जी द्वारा यह घराट जा रहा है, जिसमें आसपास के 8 से 10 गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, पिसाई करते हैं। साथ ही जो हम लोग जिन गांव में यहाँ पे काम कर रहे हैं बांदल घाटी के नाम से, वहाँ पे महिलाएं जो भी काम कर रही हैं, जैसे अचार, जैम कुछ भी बना रही हैं, या उनके जो घरेलू उत्पाद हैं जैसे आटा हो गया, मंडवे का आटा हो गया, मक्के का आटा हो गया, दालें हो गया, तो उसके लिए भी ये घराट जो हम लोगों का ऐसा ये बिल्कुल सड़क के पास है, तो यहाँ पे लोगों का बहुत आना जाना है। तो यहाँ पे जो भी आता है तो एक बार रुकता है और देखता है कि यहाँ पे मतलब घराट किस तरह चल रहा है। तो इससे हम लोगों के जयसिंह पवार जी जो घंटोसेरा गांव के हैं, इनको तो फायदा हुआ ही, साथ ही जो हम लोगों के 8 गांव से महिलाएं जुड़ी हैं, उन लोगों को भी अपना उत्पाद बेचने के लिए एक मार्केट मिल गया है। अभी हम लोगों के पास साथ जयसिंह पवार जी है, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना घराट शुरू करा और हेस्को ने किस तरीके से इनकी मदद करी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार पवार जी, सर। कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक है सर, मेरा नाम जयसिंह पवार है। हाँ जी, मैं ग्राम घंटुसेरा सरखेत का रहने वाला हूँ। और एक घराट जो है सर, ये तो हमारा बहुत ही पहले जो पुश्तैनी घराट है मेरे गांव में है। तो पहले मेरे दादाजी पवार जी मैं आपको थोड़ा सा आप फोन से पीछे रहें तो फिर आप पूरी शक्ल दिख पाएगी आपकी। आप थोड़ा सा फोन अपना, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ जी ठीक है सर। हाँ जी अब बोलिए। हाँ तो सर मैं बात कर रहा था अपने पुश्तैनी घराट की, अपने जो गांव में है मेरा, पहले हम वो चलाते रहे, मेरे पिताजी दादाजी वगैरह, और मैंने भी वहीं से सिखाया है घराट चलाना। तो ये काफी साल से बंद पड़ा हुआ था, ये सिंचाई विभाग का जो घराट है मालदेवता में। तो मैंने हेस्को के माध्यम से ये सिंचाई विभाग से जो घराट लीज पे ले रखा है सर। तो यहाँ पे जो है बहुत से गांव के लोग आते हैं आटा पिसवाने, जैसे कि आपका मालदेवता, अस्तल, बजेत गांव हो गया, खैरी मानसिंह, केसरवाला, और द्वारा के लोग भी आते हैं, रायपुर, देहरादून से भी मेरे पास आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सर लगभग 2 मशीनें, यहाँ पे 2 घराट हैं। तो हेस्को के माध्यम से जो घराट बनाया गया है, चालू किया गया है, 2 टरबाइन दी गई है उनकी तरफ से। तो यहाँ लगभग एक मशीन जो है एक दिन में 12 घंटे में लगभग 2 से 2.5 कुंटल पीस देती है एक मशीन। और इसमें सर जो भी है, और गाँव में जैसे शहद हो गया, बुरांस का स्क्वैश हो गया, जूस वगैरह, और दालें होगी, जैसे सब्जियां होगी, ये भी मैं यहाँ पे बेचता हूँ घराट में सीजन पे। सर घराट देखना चाहेंगे आप? तरीके से हाँ हाँ जी जरूर जरूर। एक बार आप उधर की तरफ वीडियो कर लो, अंदर वाटर मिल में। मिल की तरफ करो। नीचे करो, नीचे टरबाइन।
एक जगह पे फोकस करके कर पाएंगे, और उसको बताइए उसके बारे में। सर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से घराट काम कर रहा था? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस आवाज मैम, आ रही है? यस मैम, आपकी हाँ आवाज जी, आ हाँ रही जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज। सर आपने देखा घराट किस तरीके से काम कर रहा था? भाभी एक बार आप लोगों ने ना जब एंटर कर रहे हो तो वहां से जरा एक्सप्लेन करते हुए जाओ कि कौन सी हमारी टरबाइन है, कौन सी हमने वुडन टरबाइन को रिप्लेस किया है, कहाँ पे हम आटे को कलेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम उसे रन करते हैं। जरा ये पवार जी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे एंटर करते हुए, तो इजीली ठीक है, होगा लोगों को समझने में। हाँ। ठीक है। भैया भैया यहाँ पे सर ये हमारा एंटर है, गेट है यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। अपने घाट के नजदीक पहुंचे। यहाँ से हम गेहूँ डालते हैं, ये डाल के दिखाओ। ये बताओ। आटा यहाँ पे लग चुका है, लेकिन मैं थैले में डाल रहा हूँ। पता है आटा डालना है। ये पहले लकड़ी हुआ। एक किसी जमाने में लकड़ी की टरबाइन होती थी, मगर अब लोहे की हो गई है। तकनीकी आगे बढ़ गई है। तो लकड़ी की होती थी वो अधिकतर टूट जाती थी। चल जाती थी। ज्यादा मालिश आटा और कुछ पूछना है सर? एक टरबाइन ये है। यहाँ पे रोशनी नहीं है अभी। ये सर एक ही तरह चल रहा है, एक बंद है, अगर एक चालू हालत में। ये आटा है, आवाज पूरा वहाँ पे आवाज बहुत तेज है पानी की, इसलिए थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पवार, हाँ जी पवार जी सर। जी, पवार जी मैं जानना चाह रहा था कि आपका यहाँ पे जो आपके घराट है इसके आसपास में फिर और भी कोई घराट यहाँ पे आपसे मतलब लोग ये देख के जिनके पानी का सोर्स है वो और भी सीखना चाहते होंगे और बनाना चाहते होंगे, क्या उन्होंने भी यहाँ पे आपने किसी की हेल्प की है सबको बनाने में, उस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को और बढ़ाने में? जी जी जी, काफी लोग आते हैं सर यहाँ पे जानकारी लेने के लिए। तो मैं भी काफी कुछ सीख चुका हूँ। मैं पत्थर वगैरह मैं भी रिपेयर कर लेता हूँ अपना आप। मिस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ जरूरत पड़ती है वहां मैं चला जाता हूँ। जी। तो आपके आसपास में यहाँ पे और कितने घराट अब जो पहले बंद थे अब दोबारा शुरू हो गए हैं? सर ये मालदीता में एक ही घाट है। पहले अच्छा रायपुर जी। हुआ करता था इससे पहले, और वो रायपुर वाला बंद हो गया, तो ये मालदीता में है एक, और इससे एक मेरा घर में है, और एक इलास वाली में है सर। और इससे ऊपर काफी आगे 11 गांव में भी बहुत से घाट हैं, अभी वो चालू कर दिए हैं लोगों ने इसे देख के ही। अच्छा अच्छा। जी जी। तो यहाँ आटा पीसने के अलावा और क्या क्या काम करते हैं आप इसमें जो घराट के सर इस्तेमाल पे?
चीजें वहाँ बेचने जी के अलावा और क्या क्या कर रहे हैं? सर, मैं आटा ही पीसता हूँ इसमें, और जैसे कि अच्छा। मैं गांव से शहद भी ले आता हूँ, बुरांस का जूस वगैरह, दाल वगैरह, हाँ, अचार वगैरह। वो तो फिर हाँ, और वो सब चीजें तो ऐसा है कि आपके पास यहाँ फैसिलिटी है, लोकेशन है, टूरिस्ट आ रहे हैं, आप साथ में बेच पा रहे हैं। लेकिन जैसे जी हमें शुरुआत में हिमानी जी ने बताया कि ऐसे घराट को काफी जगह पे मतलब कई और एक्टिविटीज में अब यूज किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप सिर्फ आटा ना पीस के आप और भी एक्टिविटीज साथ में कर सकें, तो क्या आप और मतलब वही मैं जानना चाहता, आप भी और किसी एक्टिविटी के लिए इसको यूज कर रहे हैं, सिर्फ आटा ही पीस रहे हैं इससे? नहीं, आटा ही पीसता हूँ सर, मैं बेचता भी हूँ, अपना गेहूं ला के बेचता अच्छा। भी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है, जैसे धन्यवाद। मंडुआ हो गया, मक्की होगी, और मसाले वगैरह हो गए, ये भी करता हूँ। हाँ जी, ठीक। जी। तो मालती जी, आप कुछ और इसमें बताना चाहेंगे, इसमें ऐड करना चाहेंगे? जी सर। मालती जी हेलो। कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ, मालती जी, नमस्कार हाँ मालती जी। हाँ जी सर, हमने जो ये हाँ जी। अपने घराटे हैं इनको इस तरीके से भी तैयार किया है कि पहले अब जैसे धीरे धीरे घराट बंद हो रहे थे, उसी तरीके से घराट के टेक्नीशियन भी बंद हो रहे थे, कि मतलब उनको ठीक करने वाले नहीं मिल पा रहे थे। तो अभी हम लोग की जो जयसिंह पवार जी हैं, उनको हेस्को ने इस तरीके से तैयार किया है कि आसपास के जितने भी घराट हैं, वो अगर खराब होते हैं तो वो सीधा जयसिंह जी को फोन करते हैं कि हम लोगों का घराट खराब हो गया, आप उसे देख लीजिए किस तरीके से वो ठीक होगा। तो एक तो उनको टेक्नीशियन बहुत नजदीक मिलने के कारण उनको सुविधा मिली है, जिससे उनका घराट चलाने में भी सुविधा हुई है। इससे पहले ये होता था कि घराट खराब हो गया तो उन्हें ढूंढना पड़ता था कि कहाँ से हम घराट ठीक करने वाले को लेके आए या पता लगाएं। तो अब जयसिंह जी ऐसे तैयार हो गए हैं कि वो अपना घराट तो चलाते ही है, साथ ही जितने आसपास के घराट हैं, अगर उसमें किसी भी तरीके की खराबी होती है या वो कमी होती है, तो वो उसे भी ठीक करते हैं सब। तो आप लोग क्या और भी जो लोग मतलब आप बता रहे हैं और जो यहाँ पे घराट चलाने वाले हैं, आप उन लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं इस सब में, या यहाँ पे इस एरिया में से पवार जी ही हैं जिनका आप ट्रेनिंग दी है? अभी तो सर हम लोगों के जितने गांव में हम काम कर रहे हैं, कोशिश ये गांव में जितने भी हमारे घराट चलते हैं, तो सभी लोगों को इस तरीके से तैयार करें कि वो अपना घराट तो चलाएं ही, साथ ही इस तकनीकी को कैसे जिंदा रख सकें, आगे कैसे आगे बढ़ा सके, इसके लिए भी तैयार हो जाए। तो अभी हम लोगों के इसी रैली में से 4 ऐसे लोग हैं जो अपना घराट तो चलाते ही हैं, साथ ही अगर कहीं पे घराट में किसी तरीके की कमी आती है तो उसको भी पूरा करते हैं। और सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँ, ये वही वैली है जिसमें 2013-14 में फ्लैश फ्लड आया था। और पहले इस पूरे एरिया में अगर हम पुराने टाइम को देख ले तो 10 से 12 घराट, क्योंकि इस पूरे वैली में कम से कम 15 से 20 गांव जुड़े हुए हैं। तो पहले हर गांव का अपना एक घराट होता था, क्योंकि पॉपुलेशन भी ठीक होती थी वहां पे, तब तक माइग्रेशन भी नहीं था। तो जब 2014 में वहां पे मालदेवता वैली में ही फ्लड आया था, तो काफी घराट हमारे बह गए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ घराटों में काम शुरू करा, जैसे जयसिंह का भी वहां पे अपना पवार जी का एक घराट था जो कि प्लस फ्लड में खराब हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था वहां पे। तो इसके कारण नीचे के जो इलाकों में है वहां पे हमने शुरू करा, उस एरिया में अब हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि जो जो हमारे डैमेजेस हुए उन घराटियों को हम दोबारा से कलेक्ट करके, और अभी हम लोगों ने 2 तीनों के साथ काम शुरू किया है सर। तो जो तो ये घराट है, इसको वहाँ पे आपका बनाने में, एस्टेब्लिश करने में लगभग कितना खर्चा आता है इसमें? सर अगर हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि हमें छोटा सा इसके लिए हॉल भी बनाना हो, तो 2.5 तक आपका पूरा कॉस्टिंग है, क्योंकि हमने ये ध्यान रखते हुए करा है कि ये लो कॉस्ट हो। अदरवाइज अगर अफोर्डेबल नहीं होगा तो फार्मर इसको वो कर लेगा, और 2.5 में हमारा एक अच्छा घराट तैयार हो जाता है। और ये जो घराट है, इनका एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये बिजली पे डिपेंडेंट नहीं है, बहते बिजली, हुए पानी के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन यस वही सर, चीज यस। इसका एक हम देखें तो माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी कम है कभी ज्यादा है। कभी आपके जो पहाड़ी नाले हैं गर्मियों में सूख भी जाते हैं, तो जी सर। उस और बरसात में देखें तो वहाँ पे पूरा बाढ़ वाली हालत हो जाती है, तब भी ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इन सब चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया जाता है? तो जैसे जय सिंह जी का है, तो जय सिंह जी का तो बरसात के टाइम पे बिल्कुल बंद होता है, लेकिन वो शायद जय सिंह जी का आपका 2 महीने बंद रहता है ना? जी, नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है, पर कभी कभी जब ये बाढ़ आ जाती है जब तो नहर ज्यादा बाढ़ में। की सिचुएशन होती है हाँ सर, क्योंकि जी घराट को बनाया ही ऐसी जगह पे जाता है सर जहाँ पे
क्योंकि हमेशा आप कहीं पे भी घराट को जब हम बनाते हैं सर, तो हम एक अलग से कैनाल लेकर के बनाते हैं, इसके लिए अलग से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ये बहुत रेयर होता है कि हमारे, लेकिन मोस्टली अगर ज्यादा से ज्यादा इसको फर्क पड़ता है तो 2 महीने का पड़ता है, बाकी हमारे 10 मंथ की पूरा अच्छी तरीके से वर्क करता है। गर्मियों में जब और पानी का प्रेशर बहुत कम रहता है उस समय क्या करते हैं फिर? सर पानी का प्रेशर आजकल थोड़ा गर्मियों में कम हो जाता है, हाँ जी, तो वैसे चल जाता है, एक चक्की तो चली जाती है सर, ज्यादा भी नहीं, तो इतना भी नहीं होता कम पानी यहाँ पे ना। इस मामले में सर हमारे जयसिंह जी बहुत लकी हैं। इनकी नदी में जब पानी बहुत तेज होता है तब घराट बंद होता है, नहीं तो पानी का फ्लो बहुत अच्छा है सर यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलिए ये एक बहुत जरूरी चीज है कि लोकेशन ऐसी हो कि मतलब हर सीजन में आप उसको चला सकें। ठीक हाँ है। जी, इसमें सर आप 3 कुछ जो नदियां हैं, 3 नदियों का जो एक नहर में पानी इकट्ठा कर रखा है, तो उससे जो है मुझे फायदा मिल जाता है, ताकि मैं चक्की चला सकूं, इससे अगर अपना ग्राहक चला सकूं, इतना कम नहीं होता। अच्छा अच्छा, कुछ और आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? कुछ और क्या बताना चाहते हैं हमें? और क्या बताऊं सर। अच्छा, चलिए धन्यवाद पवार जी आपका ठीक है, यहाँ जुड़ने के लिए। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ हीरा लाल जी को और चंदन बोरा जी को। वो अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव यहाँ हमारे साथ शेयर करें और बताएं कि किस तरीके से घराट उनको फायदा पहुंचा रहा है और कैसे और इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। चंदन जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। चंदन जी। नमस्कार चंदन जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। चंदन जी थोड़ा सर सा मैं फोन से दूर रहेंगे तो आपकी शक्ल ठीक से दिख पाएगी, अभी नहीं तो आपका फेस कट रहा है। हाँ अब बिल्कुल बढ़िया चंदन जी। हाँ जी। सर मैं 4-5 साल से हैस्को के साथ जुड़ा हूँ सर। उससे पहले मैं एज ए टेक्नीशियन एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है हरिद्वार में है, उसमें जॉब करता था। फिर अभी 5 साल से मैं हैस्को में जुड़ा हूँ और यहाँ पे जो घराट का काम है इसको देखता हूँ, और जहाँ भी कहीं घराट लगते हैं साइट विजिट करने जाते हैं और घराट लगाते हैं। जैसे कि हिमानी मैडम ने बताया कि घराट जो है ट्रेडिशनल वाटर मिल जो पहले चलते थे उसमें हमने क्या क्या मॉडिफाई किए, लकड़ी की टरबाइन को चेंज करके हमने एमएस स्टील की टरबाइन लगाई, और इसमें एक खास हमने जो है बेरिंग्स यूज करे, बेरिंग से उसकी इफिशियंसी बढ़ी, और इनके उसके साथ पुली और जो बेल्ट होती है उसकी हेल्प से आप कॉटन कॉम्बिंग, तेल निकालने का ये सब भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, जैसे गांव में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे अल्टरनेटर को जोड़ के हम 7-8 बल्ब भी उससे जल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर। और धान कूटने की मशीन लगाते हैं और मसाला कूटने की मशीन भी उनको देते हैं, क्योंकि गांव में कनेक्टिविटी और सड़क बड़ी दूर होती है तो लोगों को बड़े दूर दूर जाना पड़ता है, तो उससे उनकी हेल्प हो पाती है। और अभी मैं डोपाला विलेज में हूँ, यहाँ पे भी एक बहुत पुराना घराट है जो 50-60 साल पुराना था, इसको भी हमने अपग्रेड किया है। तो मेरे साथ अभी एक लेडीज बैठी हैं और एक हीरा लाल जी है, दोनों घराटी हैं। इन दोनों के लिए भी हैस्को की मदद से घराट बनाया गया था। अभी हीरा लाल जी से कराऊं सर आपकी बात? हीरा लाल जी बैठे हैं जो घराटी हैं, घराट चला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हीरा लाल जी। नमस्कार हीरा लाल जी। नमस्कार जी, मैं डोंगोले रहता हूँ सर। हाँ जी सर मैं डोंगोले रहता हूँ। इसको की मदद से मैं बड़ा अच्छा वो मिला। पहले हमारी लकड़ी की टरबाइन होती। हीरा जी अपना फोन थोड़ा सा ठीक से करें ताकि हम आपको देख सकें, अभी आप दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। नीचे की तरफ। भोला जी आप उनकी तरफ फोकस कीजिए उसके। हाँ हाँ जी। हाँ जी हीरा जी अब बताइए। सर नमस्कार जी। लाल जी नमस्कार। हाँ जी सर हम इसको से जुड़े हुए हैं, हम घराटी हैं। और जैसे हमारे यहाँ लकड़ी की टरबाइन होती थी ना पहले, तो लकड़ी की टरबाइन हमने हटा कर लोहे की हैस्को के उससे द्वारा दी गई हमें, और इससे हम जब बड़ी अच्छा लाभ हो रहा हमें। जैसे मक्का पीसते हैं, गेहूँ पीसते हैं, और गांव के लोग भी आते हैं हमारे पास, और इससे हम पहाड़ों में भी बड़ी अच्छी तरह चक्कियाँ लगाते हैं। और बहुत लोगों के साथ जैसे धान कूटने का हो गया, मसाला पीसने का हो गया, जैसे कोई फर्नीचर कोई मशीन हो, पेट्रोल डीजल खत्म, बिल्कुल इससे हम सब काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते, दिल जोशी ने काफी मदद की हमारी हैस्को के द्वारा, तो हम काफी मतलब इससे वो हुए, मतलब मदद इन्हें काफी हमें दिए हैस्को ने, और बड़े अच्छे पार्टियों को जोड़ रहे हैं इसमें हैस्को से।
तो सर मैं कहूँगा सर आवाज आ रही सर? आई एम हाँ जी, हाँ ऑडिबल? जी, आ रही आवाज आ रही है। बोरा हाँ जी जी। वहाँ पे इस समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? नहीं अभी तो नहीं हुई मैम यहाँ पे। अभी नहीं हो रही है? अच्छा। घराट चल रहा है अभी वहाँ पे? घराट चल रहा है, घराट दिखा घराट सकते हैं। दिखाइए, हाँ घराट दिखाइए। सर आप देख पा रहे होंगे ये टरबाइन चल रही है। यही पहले लकड़ी की हुआ करती थी जिसको हमने चेंज करके एमएस स्टील में कन्वर्ट किया है। और इसकी हेल्प से सर इसमें जो बेल्ट लगी है उसकी वजह से जो घराट का पत्थर है वो घूमता है उसमें। ये आप देख पा रहे होंगे सर, पत्थर चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आटा पिस के आ रहा है। इस घराट पे काफी लोग आते हैं सर आटा पिसवाने, क्योंकि जो भी घराट का आटा एक बार खाता है वो फिर उसको इसकी वैल्यू पता चलती है, क्योंकि इसके फाइबर बर्न नहीं होते। आटा बहुत अच्छा इसका टेस्ट में रहता है। हाँ ये चंदन जी, इसके अलावा तो यहाँ पे जो हमारे हीरा लाल जी हैं, जैसे उन्होंने बताया, ये और भी यहाँ पे सिर्फ आटा ही नहीं पीस रहे हैं, इसके अलावा ये और भी यहाँ पे कपास और इस सब का भी काम कर रहे हैं साथ में। तो इनके पास यहाँ कितने घराट लगे हुए हैं और एक ही घराट को अलग इन सब चीजों के लिए यूज कर रहे हैं या हर काम के लिए अलग अलग रखा है इन्होंने यहाँ पे? नहीं एक ही सर, यहाँ पे टोटल 3 घराट है सर। यहाँ पे आसपास में 3 घराट है। तो अभी जैसे हिमानी जी बता रहे थे कि यहाँ से बिजली भी इससे मतलब अपना बल्ब वगैरह जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये घराट हैं, आप जो बता रहे हैं इस इलाके में 3 हैं, तीनों से ही ये बिजली बनाने का काम साथ में चलता है या कभी कभार ही करते हैं इसको इस्तेमाल इसके लिए? कभी कभार ही करते हैं सर। वैसे तो बिजली है वैसे गांव में, और जैसे इस गांव में तो बिजली आ गई है, पहले नहीं थी। हाँ पर जी। जैसे अभी भी एरियाज में, जैसे और गांव में है हमारे गढ़वाल कुमाऊं में, तो वहाँ पे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। अल्टरनेटर वहाँ पे देते हैं तो वो यूज करते हैं। यहाँ पे तो अब बिजली आ गई है। और हाँ जी। थोड़ा यहाँ पानी की इश्यू रहता है कि गर्मी में थोड़ा पानी कम हो जाता है, तो अल्टरनेटर के लिए क्या है कि सर 1500 आरपीएम चाहिए होता है, तब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो भी मतलब दिन में तो बिजली का यूज नहीं होता। हाँ रात को कर सकते, पर बिजली का इशू यहाँ पे है नहीं, तो आती है बिजली। हाँ गांव में थोड़ा सही रहता है, गांव में अल्टरनेटर का यूज हो जाता है और बिजली पैदा भी कर सकते हैं वो अपने अपने लिए। अभी जैसे आपने बोला कि गर्मियों में यहाँ पे आपका पानी का बहाव काफी कम रहता है, तो क्या उस समय भी आपका ये घाट चलते रहते हैं, इनको गर्मियों में बंद करना पड़ता है? हाँ चलता है, ऐसे कम नहीं होता, पानी उतना कम नहीं होता। मतलब थोड़ा पिसाई फर्क आ जाता है, कम पिसता है थोड़ा, लेकिन चलता है, बंद नहीं होता कभी। इनका अब 40-50 साल। हाँ जी, अब यदि हम देखें, क्योंकि आपने बताया कि इस इलाके में बिजली आराम से आ रही है और मतलब उस बिजली की यहाँ समस्या नहीं है, तो जो हमारे नए जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो हमारे नए मशीन्स आ गई हैं, तो उनका भी आपका यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा मार्केट में। तो उससे आपको मतलब यहाँ पे क्या इनकी कमाई वगैरह पे कुछ फर्क पड़ रहा होगा उससे? क्योंकि यहाँ पे इनका जो है, अब जैसे गर्मियों में पिसने में समय ज्यादा लगता है, लेकिन जो है बिजली से चल रहे हैं वो तो आपका कंपैरेटिवली फटाफट पीस के आपको दे देते हैं। तो उस सबसे कंपटीशन कैसा है यहाँ पे? नहीं सर, तो देखो सर, ये तो नेचुरल सी बात है कि जो बिजली वाले चलते हैं घराट या जो भी है, वो तो ज्यादातर पैसे तो कमाते ही, मतलब वो फास्ट भी करता है काम, वो तो सही बात है। पर ये है कि जो लोग एक बार घराट में आता है आटा पिसवाने, तो फिर वो उसको ले इंटरेस्टेड रहते हैं, दोबारा भी वो उसी को लेने आते हैं। यहाँ पे हमारे जो हैस्को है, यहाँ पे हमें दिल्ली से मुंबई से भी ऑर्डर आते हैं कि हमें घराट का आटा चाहिए। वो महीने में आते हैं और ले जाते हैं घराट का आटा। कंपटीशन तो सर होता ही। अब लोग आजकल वही है कि कम प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी जो आते हैं काफी लोग आते हैं। तो 3 घराट है, तीनों में बहुत फर्क रहती है। हम यदि कॉस्ट वाइज कंपेयर करें तो यहाँ पे मतलब जो आटा जो ये घराट में पीस रहे हैं, इसका कॉस्ट और जो मार्केट में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो मिल से आ रहा है उसमें
कितना डिफरेंस आ जाता है? यहाँ पे जो 2 रुपीज पर केजी है, हाँ जी। बाजारों में 4 रुपए है ही, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो। तो देखा जाए तो यहाँ पे लागत कम है, तो हमारे मतलब पिसाई भी इसलिए कम आ रही है, तो लोगों को सबसे मतलब ज्यादा ये इकोनॉमिकल ज्यादा पड़ता है उस तरीके से। हाँ सर, ये तो है, कह सकते हैं। बट सर वही है कि अगर चक्की में पिसाने वाला भी अगर घराट में एक बार अपना गेहूं पिसवाए तो फिर वो यही इसी को प्रिफर करता है। हाँ, तो मेरा अगला सवाल उसी चीज से था कि यहाँ पे हमारी कॉस्ट भी कम आ रही है, और यहाँ पे हम जैसे आपने बात की न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें, क्वालिटी के हिसाब से देखें, तो ये आटा बेटर है। और हेस्को का इतना बड़ा नेटवर्क है, तो आप इनके मतलब मार्केटिंग के लिए जो नेटवर्क है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर रहे हैं? सर मैं इसमें ऐड करती हूँ। इनिशियली जब टाइम तक जैसे मैंने आपको बताया कि हम हेस्को के आटे को प्रमोट करने के लिए लोगों को बताते हैं, तो जैसे मैं बताया कि दिल्ली मुंबई से भी लोग आते हैं और देहरादून के आसपास के भी कई लोग आते हैं, उत्तराखंड से ले जाते हैं। मतलब अपने लेवल पे करते हैं कोशिश कि मार्केटिंग बढ़े, तो लोग आते भी हैं, ऐसी बात नहीं, आते हैं लोग बात। कुछ और आप बताना चाहेंगे बोरा जी, या हीरालाल जी कुछ अपनी तरफ से और जोड़ना चाहते हैं इसमें, या आपने कोई जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही है वो शेयर करना चाहें? परेशानियाँ यह है कि आसन नदी के 2-4 घराट हैं, इनको भी हम जोड़ना चाहेंगे कि लकड़ी की प्रॉब्लम मेनली वैसे कुछ नहीं सर। हीरालाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि और भी ऐसे घराट बने इसी नदी पे, जो नदी और बने, इस नदी पे 7 घराट बने हुए हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो आगे यदि और घराट बनाने के जैसे सजेशन दे रहे हैं, यदि और भी बनते हैं, तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, उससे कोई चीज आगे के लिए मतलब जो सजेस्ट करना चाहें कि क्या इस प्रोग्राम में और इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं? आप क्या और सर कुछ सुझाव सर और कैसे अच्छा किया जाए? और इसको सर हम अच्छी तरह से टेक्निकल दे रहे हैं इसमें। सर इसमें जो आसन नदी में जो है घाट छुटे हुए हैं बीच में, तो हम भी इनको अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं। अनिल जोशी को ये हम रिक्वेस्ट करते हैं आसन नदी में जोड़ना चाह रहे हैं सर। और भी घाट हैं इन्हें जो हमें सर में 4 घाट हैं ग्रामांचल में, तो हम उनको भी जोड़ना चाह रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रही है, कट रही है, तो आप दोबारा बोले। आप क्या बोलते हैं, आप समझ नहीं आया क्या बोले, बीच में आवाज कट गई आपकी बहुत ज्यादा। सर थोड़ा ये रूरल एरिया है, विलेज का, तो हो सकता है कि आवाज थोड़ी कट रही हो। हाँ तो जी, अब साफ आ हीरालाल रही है। जी जो बोल रहे थे आप उसको दोबारा से बोलना चाहेंगे, जो इनके सजेशन थे आप देना चाहेंगे? सजेशन वही है सर इनके, ये कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि और भी घराट बने और कुछ नई टेक्निक्स हो, तो जिससे और इफिशिएंसी बढ़े, ऐसा सुझाव, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद हीरालाल जी, धन्यवाद चंदन जी। यदि आपके और कोई सुझाव नहीं है तो मैं फिर वापस जाता हूँ हिमानी जी की तरफ। हिमानी जी। जी सर, जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद, धन्यवाद चंदन जी। हाँ जी, हाँ जी, हिमानी जी आप साथ हैं यहाँ पे? जी सर। हाँ जी। तो अभी जैसे आपने इनका सजेशन सुना, ये कह रहे हैं कि इसमें और यहाँ पे घराट एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजी है उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उसके बारे में हेस्को अभी और क्या कर रहा है, क्या मतलब इसमें सर आपको अभी लगता है? है? हाँ जी सर, मैं सर आपको ये ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ये हीरा जी को दिखाने का एक ये भी था हमारा उद्देश्य, क्योंकि हीरा जी के परिवार वाले 60 सालों से इससे जुड़े हुए थे। तो किस तरीके से ट्रेडिशनल नॉलेज को हम लोगों ने थोड़ा अपग्रेडेशन करने की कोशिश करी है, और 94 से ये हेस्को के साथ जुड़े हुए हैं। सर हम लोगों ने सहसपुर में, क्योंकि उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया था, वहां पे एक मॉडर्न घराट डेवलप किया हुआ है जो फुली ऑटोमेटिक है, कि उसमें आपको मैनुअली बहुत कम काम करना पड़ता है, जिससे उसकी इफिशियंसी भी बढ़ी। और क्योंकि ये हमें जरूर देखना होता है सर, क्योंकि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें लोकेशन बहुत अच्छी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, क्योंकि अगर बहुत दूर दराज इलाके में बहुत कॉस्ट में अगर कोई चीज बनाते हैं और अगर उसका हमें आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, तो वो शायद उतनी सस्टेनेबल ना हो।
तो सहसपुर ये जो हमारे मेन देहरादून के ही इलाके में है, वहां पे हमने बनाया। और अगर उस फार्मर का आप टर्नओवर ही देख लें तो मंथली उसकी इनकम 40,000 रुपीज इससे है। और क्योंकि सर उसका जो भी वो वहां पे प्रोसेस करता है, उसको इमीडिएट सीधे एक आउटलेट मिल गया, उसने अपना खुद एक आउटलेट खोला और उस आउटलेट के माध्यम से वो मार्केटिंग करता है। तो बाजार उसके पास है। और उसका एक एडवांटेज ये भी है सर, क्योंकि उसके घराट के आसपास, उसके आउटलेट के आसपास बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उसका जो भी वो प्रोसेस कर रहा है वो डायरेक्ट मार्केट हो जाता है। तो इस तरीके से हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि हम उसे मॉडर्न तरीके से लेकर के आए, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से घराटी बहुत ज्यादा डिमोरलाइज भी हुए हैं इन चीजों को लेकर के। तो ये एक मूवमेंट है तो जो धीरे धीरे ही पिकअप हो रहा है और आगे बढ़ रहा है सर। ओके, मुझे लगता है हेस्को अपना यहाँ पे रोल बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है। किस तरीके से बहुत ही ट्रेडिशनल टेक्निक जो कि कई सालों से, मतलब सालों के सदियों से इस्तेमाल में लाई जा रही है, और उसको आज आपने एक थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन से उसको और ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल बना दिया। और मतलब वो एक हम कहें फाइनेंशियली एक वायबल ऑप्शन इस समय हमारे पास है। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पे मतलब सराहना करना चाहूंगा। धन्यवाद। आप इसमें कुछ और मैसेज देना चाहें, या आपके जो ग्राउंड लेवल पे आपने काम किया है तो लोगों की जो परेशानियां हैं वो आप हमसे शेयर करना चाहें इसके लिए? सर वाटर मिलर्स की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो, उससे तो टेक्नोलॉजी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनपुट हेस्को ने दिए हैं, डॉक्टर जोशी ने इतने साल पहले दिए थे, वो मेन प्रॉब्लम थी। क्योंकि अगर सर हम इकोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक टरबाइन बनने में आपका पूरा एक पेड़ लग रहा था। तो कहीं ना कहीं हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको रिड्यूस किया हुआ है, क्योंकि अगर हर साल उसको आपको रिप्लेस करना होता था, क्योंकि वो लकड़ी की होती थी तो ज्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी भी नहीं होती थी। तो यही है कि जितने लोग अभी भी, क्योंकि अगर बहुत दूर दराज अगर हिमाचल में जाइए या फिर अगर आप उत्तराखंड के बहुत पिथौरागढ़ और इन इलाकों में, अभी हम लोग लास्ट टाइम गए थे जहाँ हमने जस्ट इनिशिएट, तो वहाँ लोग अभी भी इसको यूज कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि नई टेक्नोलॉजी से जुड़ें। और साथ में सिर्फ खराट को, क्योंकि हर जगह पे, जैसे अभी बोरा जी ने बताया, क्योंकि इस दोख वाला गांव में पहले इलेक्ट्रिसिटी का काफी था, वहां पे लाइट नहीं थी। अभी कुछ सालों पहले क्योंकि हर गांव में लाइट पहुंच चुकी है। तो जिन इलाकों में अभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और हेस्को ने ये आर्मी के साथ बहुत काम किया हुआ है घराट को लेकर के, क्योंकि अगर हम आर्मी के एरियाज में जाते हैं तो बहुत दूर दराज इलाकों में होते हैं, तो जहाँ पे जिस चीज की आपको जरूरत है हम उस चीज को वहां पे इंटरवेन करते हैं। ये तो आपने इसके फायदे की बात कही, और किस तरीके से अनिल जोशी जी का बनाया गया ये जो इसमें टरबाइन थे, जो आपने स्टील वाले टरबाइन इसमें इंट्रोड्यूस किए, इससे एनवायरमेंटली और ज्यादा सस्टेनेबल हो पाई है चीज। मैं लेकिन यहाँ जानना चाहता, क्योंकि इस जो ये प्रोग्राम टेक्नीव चलाया गया है, इसका एक मकसद तो है कि हम जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उनको और लोगों तक पहुंचा सके। दूसरा इसका मकसद ये है कि हम जो ग्राउंड लेवल पे इन टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं की परेशानियों को भी समझ सकें, और उनकी परेशानियों से आगे कैसे हम मतलब इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में आप लोगों से फीडबैक ले सकें। तो मेरा एक वही सवाल जो मैं आपसे पहले पूछा था फिर रिपीट कर रहा हूँ, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उनकी परेशानियां जो आप लोगों ने एक्चुअल लेवल में फील की होंगी, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं जाके उनके साथ, तो आप उनकी परेशानियों को बेटर समझ सकते हैं। उसके बेसिस पे आप इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए और क्या सजेशन दे सकते हैं, तो वैसा कुछ आपके पास है? सर अगर हम गांव में किसी भी चीज को बात करें तो सबसे मेन प्रॉब्लम मार्केटिंग की ही आती है। अगर हम किसी भी चीज को लार्ज लेवल में, क्योंकि वो उससे पैदा तो कर लेता है किसी भी प्रोडक्ट की, मैं सिर्फ एक वाटर मिल की ही बात नहीं कर रही हूँ सर, जैसे हम लोग प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि सर हम ही, माना मैं एक फार्मर हूँ तो मैं ही तो उसे प्रोड्यूस कर रही हूँ। अगर एप्पल की बात करूँ, ऑरेंज की बात करूँ, मैं उसको ग्रो कर रही हूँ, मैं उसको कर रही हूँ, लेकिन मीडिएटर या किसी के थ्रू वो बहुत सस्ते दामों में जाता है और वही वैल्यू ऐड होकर के हम लोग खरीदते हैं। तो अगर इनके लिए मार्केटिंग की बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए मार्केटिंग, उसकी कुछ ऐसी फैसिलिटीज, कोई ऐसी चेन डेवलप हो जाती सर, जिसकी हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इतने ज्यादा उसमें सक्सेस, हमने एक कोशिश करी है वाइस करके एक ब्रांड बनाने की, वुमेन इनिशिएटिव फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि अगर जैसे किसान है या मैगी है, जैसे ये ब्रांड कभी ना कभी तो इनिशिएट किए गए होंगे और इतने बड़े पॉपुलर हो गए, तो चाहे हमारे घराट का आटा हो, सब उस ब्रांड के अंडर में आकर के, क्योंकि हम जिस भी एरिया में गांव में जाते हैं सर, मार्केटिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक, अवेयरनेस, न्यूट्रिशनल, ये सब पॉइंट
आजकल लोगों के दिमाग में है, तो उससे मुझे लगता है बहुत जल्दी ही हम इस चैलेंज को भी वो कर लेंगे। तो इसके लिए आपने कोई वहाँ के जो लोग के आसपास में जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में कई जगह पे अब नए स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं, तो क्या आपने उनके साथ अपना इस प्रोग्राम को जी जोड़ने सर, की कोशिश की जी है सर, ताकि हम स्टार्टअप्स लोगों ने इसको फिर और आगे ले सकें? हम लोगों ने सर एक सात्विक तत्व करके बहुत बड़ी चेन है जो कि गुजरात में अपना कर रहे थे। हमने मोस्टली अपने ज्यादा किसानों को उनके साथ टाई अप किया है। और एक वैली कल्चर करके सर काफी बड़ा ब्रांड है। इवन वो हमारे फार्मर से ही जो वो पहाड़ी सॉल्ट बनाते हैं, हनी बनाते हैं, उनको लेकर के हमारा ही ब्रांड रख करके मार्केट करते हैं। लेकिन जब वो बहुत लार्ज स्केल में जाते हैं तो वो सिर्फ हमारे फार्मर्स को एक्नॉलेज करते हैं और फिर वो अपने ब्रांड के अंदर करते हैं। लेकिन डॉक्टर जोशी का मानना है कि हम अपने फार्मर्स के ही ब्रांड के अंडर में करें। तो हम लोगों ने इसमें जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे WII है सर, वहाँ पे जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं, तो हमारे कुछ पर्टिकुलर फार्मर्स के नंबर उनके पास है, वो उन्हें कांटेक्ट करते हैं। इस तरीके से जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है हम लोग उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये इनसे ही इनके प्रोडक्ट लें सर। और घराट के आटे की बात करें सर, तो जितने सचिवालय सेक्रेटेरिएट है यहाँ पे सचिव लोग आकर के खुद हमारे फार्मर्स से लेकर के जाते हैं। तो ये हमारी अपनी स्तर में कोशिश है सर कि क्योंकि वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे हाईलाइट, न्यूट्रिशन के पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि जिससे कि उनकी प्रोडक्ट इजीली मार्केट हो जाए। हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही कि किसी भी मतलब टेक्नोलॉजी के लिए आगे मार्केट तो हेस्को के प्रयासों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुला ओके, धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक। नमस्कार प्रभा जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हमारे साथ डॉक्टर लाल सिंह जी आ गए हैं? नमस्कार प्रभात जी। नमस्कार सर। नमस्कार। और डॉक्टर मनिंदरजीत कौर। Yes sir, I'm present. ओके मैम। नमस्कार मैम। ये सेशन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मैं मॉडरेट करूंगा। ये है माउंटेन सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के बारे में। ये तकनीक डेवलप करने की क्यों जरूरत पड़ी, सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। ऐसा महसूस किया गया पहाड़ी इलाकों में कि जब महिलाएं घर में रहती हैं तो पूरा दिन उनको चूल्हे के साथ ही रहना पड़ता था, क्योंकि ठंड के मौसम में या कभी भी पानी गर्म करने के लिए उनको पूरा दिन चूल्हा जला के रखना पड़ता था। कुछ टाइम के लिए खाना बनाना होता था, उसके बाद उन्हें पानी गर्म करने के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए जो पानी गर्म करते थे उसके लिए उन्हें चूल्हे जला के रखना पड़ता था। इसके लिए उन्हें महीने में 15 से 20 दिन जंगलों में जाकर के 5-5 किलोमीटर दूर जाकर के लकड़ी लाने पड़ते थे। इस वजह से उनके पास कोई टाइम नहीं बचता था। महिला सशक्तिकरण को की दिशा में एक प्रयास वहाँ पे उपस्थित हिमालयन रिसर्च ग्रुप की स्थापना 1997 में की गई। मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर लाल सिंह। इन्होंने हिमाचल रिसर्च ग्रुप की ये संस्थापक सदस्य हैं, अभी ये इसके निदेशक हैं। इन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है अलॉन्ग विथ डॉक्टर मनिंदरजीत कौर। डॉक्टर सिंह ग्रामीण जीविकोपार्जन के लिए, जो कि दूरस्थ ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके लिए लगभग 30 सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने 2018 में इन्हें HP स्टेट इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया था। 2021 में डॉक्टर सिंह को जमनालाल बजाज अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके तकनीक का विकास किया है। हमारे साथ आज उपस्थित रहेंगे डॉक्टर मनिंदरजीत कौर भी। ये हिमालयन रिसर्च ग्रुप के मेंबर से फाउंडर मेंबर होने के साथ साथ सेक्रेटरी हैं अभी, और ये लगभग 30 सालों से इन्होंने भी महिला सशक्तिकरण में ग्रामीण और दूर दराज एरिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से तकनीक विकसित करने में अपना योगदान दिया है।
इन्हें DST नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है, और जो 2007 में नवाजा गया था। इनके पास अभी इन्हें और महिला सशक्तिकरण की दिशा में जी मीडिया और HP यूनिवर्सिटी शिमला से भी अवार्ड प्राप्त हुए हैं। हमारे साथ आज रहेंगे श्री दीपल सिंह जी, जो कि एक कुशल कारीगर हैं, जो कि इस एरिया में जी नमस्कार सर। इस एरिया में गांव में जा करके इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं कि लोकली कैसे इस्तेमाल करना है, और उनके जब कुछ दिक्कत होती है, कुछ जरूरत होती है, तो वो घर घर जा करके इसे ठीक करते हैं और बताते हैं कि कैसे इसको ठीक करना है। उनके पास पूरी एक टीम है। हमारे साथ आज मौजूद रहेंगी श्रीमती मनी देवी, जो अपने अनुभव साझा करेंगी। उनकी पूरी ग्रुप है हमारे साथ में। नमस्कार मैम। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर लाल सिंह जी को, वो हमें इस तकनीक के बारे में पहले बताएंगे। ओवर टू यू डॉक्टर लाल। हिमालयन क्षेत्र में जैसा कि आपने बताया कि बहुत समय साल में लगभग 8 से 10 महीने बहुत सारा ठंडा वातावरण रहता है, और उस ठंडे वातावरण में क्या है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के हैं, उनमें मुख्यतः जो ईंधन के लिए जो प्रयोग होने वाली सामग्री है, उसमें लकड़ी का बहुत खूब मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और हमारे कोल्ड डेजर्ट में लकड़ी नहीं हो करके, जैसे लद्दाख के एरियाज हैं या हमारे स्पीति और लाहौल स्पीति के एरिया हैं, तो वहां पे महिलाएं जो है बहुत सारा पास्चर से गोबर इकट्ठा करती हैं, और उसको गर्मी के दिनों में सुखा के घर के बाहर बहुत बड़े बड़े ढेर लगा करके उसको एक ईंधन के रूप में घरों को गर्म करने और पानी गर्म करने तथा खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्राय जो हमारे जैसे अर्बन एरियाज हैं, उनमें बहुत सारे लोग जो है कोई व्यापार करता है, नौकरी करता है, तो उनमें इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होती है, और इन ईंधनों को प्रयोग करने का कोई उनके पास स्कोप भी बहुत कम होता है। इसलिए जो हमारे शहरों के इलाके हैं, उनमें ज्यादातर बिजली है, LPG है, इंडक्शन हीटर है, या सोफिस्टिकेटेड सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम्स हैं, उनका प्रयोग करते हैं। पर गांव में हमारी जो आबादी है ज्यादातर कृषि और लाइव स्टॉक रीडिंग के ऊपर आधारित होती है, तो उन इलाकों में हम लोग बिजली का प्रयोग अगर करना भी चाहें तो वोल्टेज काफी कम रहती है, और साथ में जंगल होने के कारण लकड़ी जो है बोलने को फ्री में मिलती है, पर उसमें जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको महिला को या घर के लोगों को लगानी पड़ती है, उसको इकट्ठा करने में वो बहुत ज्यादा होती है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और साथ में हमारे वातावरण में एक तो जंगल के कटान और जंगल से बायोमास को काट करके लाने के साथ भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और साथ उसमें जब उस लकड़ी को ला करके घर में, अगर आप ओपन कुक स्टोव टाइप, जिसको हम लोकल भाषा में चूल्हा कहते हैं, जब चूल्हे में जलाते हैं तो उसमें जलाने से बहुत सारा धुआं निकलता है, जो धुआं हमारे लिविंग स्पेस में भी रहता है, और उसको हम लोग जब उस धुएं के आसपास होते हैं इनहेल करते हैं, तो बहुत सारी हमारे को उससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफें होती हैं। जब तक महिलाएं और घर के इनमेट जरा जवान होते हैं तो थोड़ा असर कम दिखता है, पर जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है तो वैसे वैसे आपके फेफड़ों में दिक्कत होने लगती है, किसी को उसका इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को दमा हो जाता है, और सांस की तकलीफ होती है, और कई और तरीके के कैंसर डेवलप होने लगते हैं। तो ऐसी बड़ी भारी उसमें परिस्थितियां होती हैं। तो जब हमने इस सारे सिस्टम को, जब हम गांव में काम करना शुरू किए हैं, और एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में काम करने वाली एक संस्था है, हम लोग गैर सरकारी संस्था जरूर है, पर हमारा सारा काम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ऊपर आधारित है, जिससे कि हम गांवों के स्तर के ऊपर और खास करके दूर दराज के क्षेत्रों में और पहाड़ी इलाकों में काम करते हैं, तो उनकी समस्याओं को हल करते हैं। जब हमने इस परिस्थिति को देखने की कोशिश की है, तो उसमें हमें क्या है कि भी अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास, अगर हम लकड़ी की आज क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो क्लीन एनर्जी जो एक वर्ड है, इस वर्ड के साथ दिस वी कंसीडर दिस एज ए गेटवे फॉर द सस्टेनेबिलिटी। अगर किसी के पास क्लीन एनर्जी सोर्स है तो
उनकी लाइफ जो है बेस्ट हो सकती है टू द बेस्ट लेवल। अगर वो क्लीन एनर्जी का उनके पास ऑप्शन नहीं है तो हम लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए थोड़ी मतलब कम ही बात कर पाते हैं, तो एक ऐसी परिस्थिति है। तो जब हमने इस लकड़ी के सिनेरियो को देखना शुरू किया, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कैन यू मूव, यस। जब इस लकड़ी के सिनेरियो को हमने देखना शुरू किया तो उसमें क्या है कि लगभग 55 से 60% से ज्यादा लकड़ी, दिस इज एवरेज, कई घरों में इससे ज्यादा भी, जो लकड़ी इकट्ठी की जाती थी वो लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में या तो पानी गर्म करने के लिए या स्पेस हीटिंग में यूज होती थी। और जब महिलाएं इसको जंगल से लाती भी थी तो मतलब अगर हम उनकी पिक्चर भी लेना चाहते थे तो दे यूज्ड टू हाइड देयर फेसेस कि नहीं हमारी पिक्चर मत लो। They were feeling कि they are doing some menial job, they are doing something which is not to be picturized, which is not to be shown to the rest of the world that we do this job. One point उनके पास ये था कि अगर कोई जंगलात वाले या जंगल के जो अधिकारी होते हैं, जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं, अगर उन्होंने कहीं देखा तो हो सकता है वो हमारे को फाइन करे। और दूसरी तरफ ये होता था कि हम पीठ पे इतना वजन लेके चले हैं तो वी आर नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, और मतलब हम लोग ऐसे नहीं, बट हम लोग उनको कन्विंस करते थे कि ऐसा नहीं, हम आपकी समस्या को हल करना चाहते हैं, आप हमारे से बात करें। कई बच्चियां जो है, लड़कियां पढ़ लिख के आगे +2 मैट्रिक से आगे जाके कॉलेज में भी जाती थी, पर मतलब एक डिफरेंट एक्सपोजर लेके आती थी, पर जो क्लाइमेट घर का है, गाँव का है, उसमें दिस यूज्ड टू बी अ कंपल्शन। अगर वो चेंज करना भी चाहे तो उनको पास चॉइस नहीं। तो वी ट्राई टू एनालाइज दिस कि भी इस सिनेरियो को कैसे चेंज किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जब हमने इसमें कोशिश की तो आप सारी पिक्चर में देख रहे हैं कि जो नंबर 2 पिक्चर है, जो लद्दाख की पिक्चर है, उसमें भी महिलाएं अपना फेस जो है छुपा रही हैं। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि नहीं हमारी पिक्चर मत लो, हमारी पिक्चर मत लो, they were thinking कि we will be portrayed in a different way, और उससे बाहर की दुनिया को दिखाएंगे देखो लद्दाख में ऐसा है। जो आपने पहली पिक्चर में लकड़ी के लेखती आती हुई महिलाएं देखी, वो भी अपना फेस छुपा रही हैं ताकि हमारी आइडेंटिटी पता नहीं लगे। तो मतलब दिस इज द सिचुएशन की एक टैबू बन गया है कि भाई एक काम ठीक तो नहीं है पर कंपल्शन है, हम बदल नहीं सकते। अगर आप तीसरी पिक्चर देखें घरों में नीचे, तो कितना सारा फ्यूल वुड घर के अंदर स्टोर किया गया है, और ये एक फायर हैजर्ड है। जब आपने बहुत सारी फायर की माउंटेन्स में अगर सिचुएशन देखें तो भाई इतने गांव जो है आग से बेघर हो गए, परिवार जो है गांव जल जाते हैं। तो वो घर को जो बहुत सारे पहाड़ों के घर हैं, वो एक बड़े फ्यूल बॉम्ब के ऊपर बैठे होते हैं। जब सर्दियां होती, इनमें फॉडर भी होता है, इनमें फ्यूल भी होता है। तो इस तरीके से एक घर में आग लगती है तो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। तो इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमने प्रयास किया कि एक क्या लोगों के साथ जाके समझने का। तो जब हमने बताया कि 50-60% लकड़ी जो है पानी गर्म करने में लगती है, उन्होंने कहा सारे दिन हमारे को चूल्हा जलाए रखना पड़ता है। जब हम पशु के पास जाके आते हैं, हाथ धोना है तो गर्म पानी चाहिए। अगर बच्चे को कोई नहलाना है या उसने कोई टॉयलेट कर दिया है तो उसको वॉश करना है तो गर्म पानी चाहिए। अभी कोरोना के दौरान बोला गया कि बार-बार हाथ धोएं। अगर बार-बार हाथ कैसे धोए, पानी बाहर डिग्री कोई 0 डिग्री से लेकर के मैक्सिमम समर तक 17 डिग्री 18 डिग्री से पानी ऊपर नहीं होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टच इवन टुडे। जहां पे हम बैठे हैं, यू कैन सी आई एम वेयरिंग कैप एंड द स्वेटर इन द कोट बिकॉज क्लाइमेट इज कोल्ड आउटसाइड। Outside temperature is hardly 18 to 20 degree, and if we touch the water today, I checked, it is 14 degree water, and if we have to heat that 14 degree water to a variable of around 50 degree centigrade, that consumes a lot of fuel wood. And this is the way, and the people try to understand that they are here for solving our problem. Then we asked that what do you need? They said ki first, if at all there is a solution, we need a system which can heat water. But we don't want a space heating. For example, if they say कि भी हमारे को ठंड लग रही है तो हम स्वेटर पहन सकते हैं, कोट पहन सकते हैं, या रजाई के अंदर सो सकते हैं, कंबल ले सकते हैं, पर पानी हमें गर्म प्रायोरिटी पे होना ही होना है। अगर पानी गर्म करने का कोई सोल्यूशन हमें मिलता है तो हमारा फायर प्लेस डे टाइम में एटलीस्ट 5-7 घंटे बंद हो सकता है, और नाइट टाइम में
भी हम उसको ऑफ कर सकते हैं, तो उससे हम फ्यूल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसमें जैसे अब हम काम करने लगे तो वी सॉ द सिस्टम इन मार्केट, जो कि सोलर एनर्जी के सिस्टम आपने बहुत सोफिस्टिकेटेड विद हॉट वाटर स्टोरेज, ईटीसी टाइप, उसमें ग्लास की ट्यूब्स लगी हैं या फ्लैट प्लेट्स हैं, उसमें पैनल्स लगे हुए हैं जो ग्लेज किए गए हैं, और उनकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 100 लीटर पर डे का सिस्टम जो है दैट कॉस्ट समवेयर अराउंड 12,000 to 15,000 रुपीस। एंड बट द मेन प्रॉब्लम वाज कि जो पहाड़ों में अगर हम देखते हैं जब सिस्टम होता है तो वहां पे क्या है कि अब स्कीम नई चल गई है, हर घर को जल, हर घर को नल, जिसमें कि वो लगेगा पर बिल देना पड़ेगा। प्रीवियस टाइम में भी वैसे ही था कि गांव के बाहर टैप लगता था, गांव के सेंट्रल प्लेस में, विच यूज्ड टू बी अ पब्लिक टैप। हाउस होल्ड मेंबर अपना बकेट लेके घर ले आते थे, बट वो पानी का नल घर के अंदर नहीं लगा सकते। अगर जो घर के अंदर नल लगाता था उसको पानी का मंथली बिल आता है, तो उन बिल को अवॉइड करने के लिए वो नल बाहर ही रहता था, तो इसलिए कोई पाइप सप्लाई नहीं है। अगर वो सोलर वाटर हीटर लगाना है तो उसमें पाइप आना है जो ओवरहेड टैंक में जाए। ओवरहेड एक स्टोरेज टैंक होता था जो एक एंगलार्ड के स्टैंड के ऊपर रखा जाता था, उसके नीचे जो वॉशरूम होता है, रूफ होती है, उसके ऊपर सोलर वाटर हीटर को एडजस्ट किया जाता है, और वहां से टैप ला करके आप बेदिंग एरिया में या क्लीनिंग एरिया में, घर के बाथरूम में उस टैप को, हॉट वाटर को लगाते थे। पर वो सिस्टम गांव में अवेलेबल नहीं था। अगर फॉर एग्जांपल कोई आदमी उसको लगाना भी चाहता था तो हमारे जो 6 महीने विंटर्स के 2000 मीटर एंड अबव की हाइट पे अगर आप देखें, पॉपुलेशन लगभग 10,000 की हाइट अगर भी एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे वो पानी फ्रीज हो जाता है। जब हमारे को ज्यादा गर्म पानी की जरूरत की होती है तो वो पाइप फ्रीज हो जाती है। जो टैंकी से पाइप आएगा वो भी फ्रीज हो जाएगा, जो टैंकी में पानी जाएगा वो भी फ्रीज हो जाएगा। तो मैन्युअली सिस्टम में पानी डालना इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए, क्योंकि उसमें एक प्रेशर चाहिए जो ट्यूब के अंदर पानी को घुमाता था, तो इसलिए लोगों ने कहा कि अगर हम इसको लगा भी लें, आइदर तो इसका ट्यूब फट जाता है, हमारा लोकल मिस्त्री इसको रिपेयर नहीं कर सकता, और मिस्त्री अगर आएगा वो चंडीगढ़, शिमला या कहीं दूर से आएगा, और ट्यूब का कॉस्ट 1000-2000 रुपए होगा, विजिट का पैसा 2-2,500 रुपए होगा, तो इट इज नॉट वायबल। और मोरओवर हमारे सेटअप के हिसाब से नहीं है, तो दैट वाज अनदर मोटिवेशन। तो देन वी ट्राई टू डेवलप अ सिस्टम keeping in view the requirement of the household and the geographic condition or climatic condition or uses in a particular household। तो उसमें हमने क्या किया कि एक सिस्टम ऐसा बनाया कि जो पर बैच जो है आपको 18 लीटर पानी दे दे। अब 18 लीटर पानी क्यों देगा? क्योंकि एक बकेट जो नॉर्मल साइज बकेट मार्केट का मिलता है जिसमें बेदिंग के लिए यूज होती है या पानी लिफ्ट करने के लिए, दैट इज अराउंड 18 लीटर्स ऑफ वाटर। 18 लीटर्स का बकेट होता है एक नॉर्मल, जिससे आदमी एक नहा सकता है और एट ए टाइम विमेन और कोई मेंबर इजीली उसको वन प्लेस टू अनदर पिक कर सकता है। तो हमने एक ऐसा एक वाटर कॉइल बनाया, और वो जो है एक एल्युमिनियम अलॉय का पाइप बना करके सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में वी यूज जीआई पाइप्स। तो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट दैट सिस्टम बिकॉज़ टाइम इज शॉर्ट। तो उसमें जीआई सिस्टम में अंदर का कोटिंग उतर जाता था, तो थोड़े टाइम के बाद जंग वाला लाल रंग का पानी उसमें आने लगा, तो दैट वाज नॉट फिट इवन फॉर टेकिंग बाथ। तो बाकी फिर वो साल 2 साल हमने उस डेमो को भी देखा, but somehow we made that obsolete and we shifted to a new coil of aluminum and alloy, handolium alloy, which gives you food grade water। और उसकी प्रेशर एंड अदर स्टडीज हमने डिटेल में की, और उसको एक फ्रेम में जो लोकली गांव में हर घर में मिलती थी लकड़ी के 3 फुट बाय 6 फीट के साइज में उसको एडजस्ट किया, जिसके बीच में वो 18 लीटर का कॉइल आ गया। उसके पिछली तरफ हमने एक एब्जॉर्बर, जीआई शीट का एक एब्जॉर्बर बनाया जो फिक्स किया फ्रेम के बीच में। फ्रंट साइड में उसमें हमने वाटर कॉइल व्हिच विल होल्ड 80 लीटर्स ऑफ वाटर उसको फिक्स किया, एंड द साइड इज इल्यूमिनेटेड थ्रू सन थ्रू अ विंडो ग्लास। The glass जो हमने यूज किया that is ordinary window glass, so that if it is broken at some stages, the people can easily buy it from the market and they can fix it at the household level themselves, or they can ask some carpenter to come from the nearby place to shift it, because normally that much of expertise available with almost every household.
At the back side of the system, I'll show it a demo outside. It was insulated with a thermocol and then covered with an aluminum sheet. And it is made that at the lower end of the coil, we fixed one T, which gives two outlets. One outlet is put to the upside to fill it manually through a water like hammam, and the other side of the T is fixed with a night drainage kind of a exit. And there was at the upper end of the coil, there was hot water will be dispensed outside with the addition of a cold water at the inlet. That way, because water rotates through that pipe 80 liter and brings the hot water when we add the cold water. During night time, when to prevent freezing or cracking of the pipe, last batch is drawn through that drain pipe so that the coil is empty during night time so that it may not freeze. Because there is no storage of hot water in it. Next slide, please. Why storage is not required? Because most of the time we found the routine who lives in the villages, they get up early in the morning. They will just lit the fireplace and they will cook the breakfast and other things for the school-going children. And then the rest of the people who stays back, women and the men, they go to the agriculture field or women attend the livestock in the morning for milking or just removing the cow dung and all. After 1 hour or so, they come back and they need hot water. By the time this system is illuminated with the sunrise, the first batch will take almost 30 to 35 minutes to heat the system. And the water reaches around 50-70 degrees centigrade. They draw it and they wash the hands and they just go for the kitchen to start cooking and other things. And then by the time male counterpart or the household member who had gone to the field, they will also come back by 11 or so. And before taking the lunch in the morning or two-time meal system, the 11 or 12, they will first take bath and all, they clean their clothes and everything, and then they will have lunch. After that, the lady of the house will go for washing of the utensil and the cleaning of the clothes, washing of the clothes during the day. And then in the evening again, she will just go for the cattle kind of attendance and all, and also feed the cow with this hot water in mountains, because they also need hot water to feed the livestock, because they cannot feed them with a 0 degree kind of water temperature that affect the livestock in a big way in health terms. And this is the way, it is the same. And early morning, they said they don't need a water. If somebody is going to take a bus early morning or some member is working somewhere to attend the office at 10 o'clock, because the fireplace, what they eat in the morning to keep them warm or to cook the breakfast, they also keep a hot water pot on the side and 1 or 2 batches they heat on that. And again, at the end, when they go to sleep, they also wash their feet and the hand, cleaning of the kitchen and everything. The last batch left in that hot water system is drained through the night drainage kind of exit for the water, and they utilize it, and system is empty for the night. And next morning again, when they get up, the first thing they do is they fill this before sunset, and when the sun comes, it starts heating automatically without any attendance or adding any electricity. This is the cycle how it works. Then we wanted to just see, what is the efficiency of this system, because then there were many questions from the people in institute or universities that how do you measure the efficiency of the system. We imported, the data logger for the high temperature data loggers, and we just placed those data logger in the cold water inlet and the hot water output kind of exit, just to maintain the temperature. And we found during daytime that we can achieve the temperature above 80 degrees centigrade. It is boiling hot water. And the bucket, if it is of 18 liters, that has to be divided into 2 with addition of cold water to make the water temperature bearable. And the graph I am showing here and the data logger I am showing, you can just see the red peaks presents the highest temperature, and this peaks comes down to a blue line, which is a cold water temperature. When cold water is added, it comes down, and when it is heated, it goes up. And the bunch of peaks with red color, that represents the day, during the day temperature of that hot water system. And every peak represents the drawing, how many times a household has drawn the water of this, because there is a almost 10 minutes gap in the recording of the temperature. That during night time, you can see the red line and blue line at the same level. That is a night duration. Next morning again, it comes and goes up and down. This is the how.
And at the same time, we submitted this system to the National Institute of Solar Energy, Gurgaon, for third-party validation and testing. And I'm very happy to say that they assessed this efficiency of the system around 70%, which was at par with a very sophisticated ETC and flat rate system. And they said it is one of the best system in comparison to the cost and material used and the uses being done in mountains. And in upper blue graphs, you can see we have just studied the usage of fuel wood during 3 seasons, and the saving with this system is almost 40% of fuel wood. Next slide, please. And when we see this, that in terms of use, in terms of installation, it is very simple. There is no installation cost. It is almost ready to be installed. You take it from our sister, our artisan group, and just install it. There is no investment. You don't need any pipe. You don't need any stand. You don't need any welding. You don't need any storage tank. Nothing. It is ready to use. You just put it in your compound. You just start putting cold water, fill it. It will give you hot water first batch in half an hour and successive batches in 15-20 minutes if you have a sun. And sun, almost in mountains, you must be knowing that it is almost 250 plus days we have sunny days in mountains. It is only 100 days where we have the cloud, we have the snow, we have the rainy season. But that is the only window and the constraint we have with the system, because that will be with every kind of solar system. And why the mountain name we are given to it is because as we go higher in the mountains, the solar energy is very intense during winter time, when we need the maximum sun and maximum cold water. And and in the plains during winter time, it is quite foggy. You won't see the sun till 12 mid of the day, because then the solar efficiency of the system is not that good. At the same time, the people in plains are not dependent on fuel wood or biomass kind of fuel for utilizing for water heating or keeping them warm. And you can just see both the picture where this has been installed, women have been using, and all those things. And in terms of SDG, we also try to analyze it as per the DST mandate. Our system addressed to almost 9 SDGs and 47 targets of these SDGs. Because I don't want to again explain this in detail, but it is just a reflection that sustainability I talked in the beginning, that how this system can be sustainable, bringing in sustainability. Next, please. Next slide, please. And system benefit, as I mentioned, heats water frequently, easy to use, and it's handy, no repair and easy to maintain, affordable, approachable, and easy installation in surroundings, easy access, because people can easily talk to the group of artisan or art station. They can easily come and go and see things that they can think of installing. Next, please. In this way, we went for large scale installation in the valley where we are sitting today, and the group with me, their houses are on this picture. You can just see picture. If you see from right to left, left to right, most of the houses, small tiny houses. You can see this is how the village is situated, and the villages are in lower elevations, and up is the hill covered with the forest. They used to go to the forest to cut the kind of fuel wood and remove the biomass. Ultimately, what was happening, the forests were denuding, and the small stream coming from there, which provide the water to their household or to the drinking or to recharge ultimately in the river. The name is Juni, in the middle of the valley. We installed around 100 plus system on this hill spur, almost I think 3 years earlier. And all the women sitting here, they have the water system in their villages, in their individual household. This system is for an individual household of 4 to 5 members, which gives 100 to 110 liter of hot water during the day, meets their all requirement of hot water during the day without lighting the fireplace. Next, please. And this way it is conserving this forest also. And total units we have installed till now are 1200. And installed, most of our system, we initially developed this technology under course code program of the DST, but later on, under that program, we had only installed 15 prototypes for different location and to understanding the genesis of this kind of a technology. But later on, this became so popular that many developmental program and developmental project of Forest Department, Rural Development Departments, and State Science and Technology Council came forward
to take this technology to different places. That's why I mentioned this has been installed by USAID Forest Plus, UNDP Secure Himalaya project, National Mission on Himalayan Studies, and HIMCOST is the state council. They had a program for Vigyan Gram. Under these popular programs, under DST programs in Ladakh, Janskar under Time program. So, and then, purchased by different agencies as a demo unit. We didn't sell them, but we provided them a demo unit, 1200 unit. And the name of Delhi I have already given. And we trained almost 29 artisans to fabricate these from time to time in different villages. We have one of the artisans, Dipal Singh, sitting, and he'll explain that over a period they as an artisan, they flew to Leh and they went to Janskar and installed, came via Kashmir and by air to Chandigarh. That was the exposure got to the artisan because of the technology what we developed. And future plan what we have is to improve the version with a hot water storage so that urbanized area or the other people can also use the technology. And this is something very, very productive for us. We are asking government that they should also have some scheme to support this clean energy technology under some program so that people come forward to install this. Initially, there were a kind of mandate that people were looking for some way or the other to get it to a project. But now there are people who have come directly. Yesterday only we sold one of the system directly to one people, one of the beneficiary in 12,500 rupees. Artisan group provided them one system. And in one of the villages, 3 days we installed 16 system, and people contributed 1,000 rupees for the wood frame. They paid in cash. Actually, that is the change now which has started coming about this technology. Next slide, please. Next slide, please. Yeah. If we see the environment impact, it is a huge contribution to the biodiversity conservation, particularly in forest. And as I mentioned, 40% fuel wood is saved with this on average. And impact on forest for conservation is quite visible. And in terms of carbon footprint, it mitigates around, if we convert that 40% saving, in terms of the carbon footprint, that comes out to be around 2.5 ton carbon dioxide emission per annum per system. And women time saving 3 hours per trip, you can say somewhere around 45 to 50 hours per month. You can say how much time they have been saving. And life comfort to improve their leisure time, especially for women, cooking, bathing, washing, drinking, saving, and better hygiene. Because I will accept this here before the women sitting around. But normally women never used to take a bath on daily basis. But with this kind of a system, they have developed a habit to have the bath during daytime or after the work they finish from agriculture and livestock. And that way their hygiene and health is improved to a maximum extent. Next, please. I'm going to finish Raji within 2 minutes. And this is just to give a picture of a modern system. You might have seen in the urban areas. We had also installed this as a cluster for one of the household cluster. There were 15 households, but they were fighting with each other right from the day one for a kind of collaborative. Somebody says कि सारा पानी इन्होंने निकाल दिया, मेरे को कुछ नहीं बचा. Cost was somewhere around 60,000. 60,000 rupees we installed, but it could not serve 60 days. The system was all teared off and nobody got benefited out of this. That was also a sort of motivation, because combined system may not work, we need to work for an individual system. Next, please. And when we did a comparative kind of thing, it is there is no comparison of the technology what we have. That is a very kind of rural oriented or locally fabricated with this kind of system. Next, please. In this way, when we talk of a comparative analysis, we found that our system is at par with the system what I showed you in the previous slide, but the efficiency of the system of ours is much better than this commercial system, and moreover, the workability, maintainability, cost effectiveness is much better in comparison to the commercial system. That's why it is so popular in the rural system, and there are more customers coming forward. Next, please.
And this is the system which was displayed at number of places to the high dignitaries like Secretary DST, Science and Technology Minister at the central level, and DST prepared this kind of poster for their exhibition at many places. We also displayed in this kind of a poster in Vigyan, rail, train biodiversity train was flagged off. Our 3 posters were there in that train also at some point of time, a few years back. Next, please. This is the last slide, I hope. And this is a unique proposition that what you read in my introduction, that we got the State Innovation Award. That was specially for developing this system. Himalayan Research Group was awarded 2 lakh rupees as a cash prize citation, and I was also given 35,000 rupees as a token for a technology development and innovation what we did. And Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh gave this award to us on Independence Day on 15th August 2018 in District Kanha. Next, please. And this is all from my side, Rajan. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर लाल। यही होता है जब हम ग्राउंड एनालिसिस करके इतना अच्छे से एक्सटेंसिव स्टडी करके कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उसका सक्सेस इस तरीके से हमें लाभान्वित करता है। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस द डिटेल्स इन सो एक्सटेंसिव डिटेल्स। एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर मनिंदर जीत कौर, वो अपना अनुभव साझा करें कि कैसे वो जब गांव में जाती हैं तो उनको महिलाओं से कैसे फीडबैक मिलता है, कि कितना रिसेप्टिव वो फील करती हैं या होती हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए। So my video is not on, but मैं ऐसे ही बात कर देती हूँ, अपने एक्सपीरियंस वैसे शेयर करती हूँ। वैसे तो सर हम as you mentioned in my biodata, like we are working for past more than 30 years in the hills only. हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज उनको लेके गए थे, बट जब हम उनके पास जाते थे तो देखते थे कि क्या क्या परेशानियां आती थी। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी थी जो उनके कहने पे ही हम उनके पास लेके गए हैं। शुरू हमारी बटन मशरूम कल्टीवेशन से हुई थी, कीपिंग इन व्यू द टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ दैट एरिया। तो उसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, देन दे सेड कि हमें फॉडर की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर उनके बाद हमने जैसे ऑब्जर्व किया कि उनको पानी की कितनी परेशानी होती है, कि हम खुद भी जैसे जो प्लेन्स में रहने वाले होते हैं, या थोड़ा लोअर एरियाज में रहते हैं, जब आप उनके साथ जाते हो, उनको मिलते हो, ट्रेनिंग कंडक्ट करते हो या डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, देन वी सी कि कितना मुश्किल है वहाँ पे ठंडा पानी मिलना। कई बार बिजली नहीं होती है गाँव में, और पीने के लिए ठंडा पानी है, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन में आपको ठंडा पानी मिलता है, नहाने की तो बात वैसे ही दूर की होती है। जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं कि हाउ टफ टेरेन्स आर देयर एंड उनका क्लाइमेट कंडीशन दे आर वेरी टफ, और वो बहुत ही मतलब कि चलना फिरना भी मुश्किल होता है। तो हम ये चीजें वहां पे जाके ऑब्जर्व करते थे, तो हमें खुद को लगता था कि जो डिफिकल्टी हमें होती है, लाइक एज ए प्रेजेंटर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, जो हम कोई भी प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द लाइवलीहुड फॉर द विमेन, सो दीज थिंग्स नीड्स टू बी ऑब्जर्व। तो अब हमने देखा कि इनको इन चीजों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, कि हम उनकी लाइफ को कैसे इजी बना सकते हैं, उनका टाइम कैसे सेव किया जा सकता है। क्योंकि जब हम चूल्हे में जाके घरों में गाँव में जाके रहते थे, क्योंकि गेस्ट हाउसेस they are not welcome, so you have to stay in their houses only. Then we used to say कि चूल्हा है जो पूरे दिन जल ही रहा है, तो उनसे पूछते हैं कि क्यों जला रहे हो आप। Then they used to say कि नहीं, पानी गर्म रहता है, आते जाते पानी निकालना है, हाथ धोने हैं और कपड़े धोने हैं, कुछ करना है तो बर्तन धोने हैं, तो हमें तो इसकी जरूरत ही रहती है। तो वो पूरी दिन ही धुकता रहता था, मतलब कि उसमें धुआं चला ही रहता था। And it is so difficult, you know, कि housing construction is also a big issue in the villages also. तो क्रॉस कर रहे हैं आप, क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है, हवा खूब चल रही है, आप वहां धुएं में बैठ भी नहीं पा रहे हो। So this gives a difficult kind of situation. So इन चीजों से now I am feeling कि they have little bit of respite, कि पानी के लिए एटलीस्ट उनको पूरा दिन वो चूल्हा नहीं धुखाना पड़ता है। उसके लिए फ्यूल वुड की सेविंग है, जिस फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए उनको kilometers and kilometers जाना पड़ता है, because in the surrounding of villages you have also seen कि nearby village में आप फुट खत्म हो जाती है, घास खत्म हो जाता है, तो आपका वो डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है टाइम पानी, तो वो टाइम कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ती जाती है। सो दे आर लेफ्ट विद वेरी like few minutes or few hours of
for themselves only and for the home only. बस fuel wood collection पे उनका बहुत ज़्यादा time जाता था. As Dr. Lal Singh has explained, 40% we have calculated the time and fuel wood has been saved. So जिसकी वजह से उनकी life को काफी ज़्यादा easy हुआ है. और we are also feeling at least like whenever you take any technology to the grassroots levels, it is not a success until unless the people from the area they come forward to accept it and to get the benefited out of it. So we are thankful to these people, those who have taken the technology and they are accepting it, and they are like I want to mention here like women as well as the farmers. At the grassroots level, they are very open to accept the new technologies. So they want. If we say, वहाँ पहाड़ में जाके आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे. We are sitting in far off places. No, they want. They are well educated. Like +2 तो वहाँ पे women है ही. Most of the women, even into the interior of the Himachal, they are educated, and +2 is the we can consider के उनकी qualification है. So every one of them, most of them, they carry the mobile phones. So if they can operate that, then they have they are looking forward that more and more technologies come and they will take up. So I think this have made their life easier. So you can have interaction with them and they will give their feedback to you. थोड़ा सा मैम अगर आप बता पाएंगे कैसे उनके जीविकोपार्जन में ये चीज, ये जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया है, क्योंकि उनका हेल्थ इससे बेनिफिट हो रहा है, उनको हॉस्पिटल कम जाने की जरूरत पड़ रही है, उनका टाइम सेविंग हो रहा है, तो इस समय का इस्तेमाल और किस तरीके से कर पा रही है? जैसे मैंने बोला है कि उनके लिए एक इजी हो गया, दे कैन लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन एंड घर की साफ सफाई में वो ध्यान दे पाती हैं. अगर उन्होंने निटिंग करनी है उसके लिए उनका टाइम मिल रहा है, कुकिंग के लिए उनको प्रॉपर टाइम मिल रहा है. और देखो वैसे भी गांव में बच्चों की इतनी ज्यादा कोई केयर तो करता नहीं है, बट नाउ इफ मदर इज अराउंड अ चाइल्ड, एटलीस्ट child has an excess of mom. So these things they are making convenient for them to be around the house, and many other livelihood activities they are taking up, like as I told you, like they are taking up further development program, other technology they are taking up mushroom cultivation also. So they have spare time, they can take different activities also, they can engage them better in different technologies and in a social activities also. So this is how they are managing and they are getting benefited out of it. ओके, अब मैं श्री दीपल सिंह जी को लाना चाहूंगा और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनका अपना अनुभव क्या बोल रहा है इसमें, गांव में जाके कैसे वो सिस्टम लगा रहे हैं और उसमें कैसे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि छोटी मोटी दिक्कतें आए तो खुद ठीक कर लें या उनको ज्यादा विजिट करना पड़ता है. सर मेरा वीडियो ऑन करवा दीजिए मॉडरेटर से. Ma'am, there is no issue from our side. You can switch on your camera. Okay. हमने 2014-15 में इनसे इसका ट्रेनिंग लिया और उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग दिया, तैयार किया, इस तरीके से इनको तैयार करना है. और फिर हमने इनको तैयार करके गांव में लोगों को बीच में ले गए. गांव में फिर लोगों को बताया यहाँ से ऐसा करना है, इनको ऐसे मॉडिफाई करना है. इसमें 3x6 की लकड़ी लेते हैं हम लोगों से गांव में, और इनके बीच में जो एल्यूमिनियम पाइप को फिटिंग करते हैं, इसमें लोहे का चादर लगता है, थर्मोकोल लगाया और पीछे से इसको बंद करने के लिए एल्यूमिनियम का शीट लगाया. और इसमें जो पेंट करते हैं हम अंदर कोयले में, जो एल्यूमिनियम का कोयल होता है, उसमें काले पेंट के साथ कोयला पीस कर डालते हैं ताकि इससे पानी गर्म जल्दी हो. और फिर इस तरीके से इनको ऊपर से शीशा नॉर्मल जो हमारा लगाया. पर एक ऐसी चीज है, एक खराब होने वाली चीज नहीं है सर, इसमें रिपेयर का काम नहीं होता. एक बार बनाते हैं बस इसको धूप की साइड रखना,
और बस यही से इसका ज्यादा 30 मिनट में एक बार ये गर्म हो जाना है। और फिर लोगों को बताया ये आसान तरीके से ऐसा रखना है, यहाँ से पानी डालना है और यहाँ से गर्म पानी आएगा। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ से कि आप लगभग एक साल में 2 लाख रुपए की कमाई करते हैं, तो वो किस तरीके से आपका होता है? हमारी कमाई ये सर, जब गांव में लोगों को इसका लाभ मिला तब गांव से इसकी डिमांड आई, ऊपर से लोगों ने बोला हमारे से इसका समय बच रहा है और हमारे को इसे और काम करने के लिए आसानी रह रही है। तभी यहाँ एचआर जी को डिमांड दिया लोगों ने, फिर और यहाँ से हम बना के लोगों को भेज गए। इस कारण हमारी भी कमाई हो गई सर। Okay, so Dr. Lal Singh, if you can explain means installation charges, how they get installation charges, and means from where you get usually the funds, because installation, it is not exactly installation charge, it is a fabrication charge. Right. This group of artisans, they charge 12 to 1500 rupees per system of fabrication, because installation is, as I told you, it is manufactured by them at one central place where we provided them a kind of facility, electricity, other things, and a platform and the storage and everything. And that point they work as per the demand, that there is a demand for around 100 system, 200 system. They prepare it, and their charge for preparing each system is 1200 to 1500 rupees. For example, they come at least 3 to 5 people at a time to fabricate this system in bulk, and then they charge this, and it is very simple arithmetics, they manufacture till now 1200 system, and if you multiply 1200 system with 1200 or 1500 rupees per system, that comes out to around 40 to 50 lakh rupees, and that is giving them 2 lakh rupees annum. This is simple, and there is no installation afterwards, and wherever they have to go, they go in the Gadi, they will load 50 systems, they will go with a truck, and they go to the village, they will install those systems, they tell only people how to keep it, and they go in the morning and they come back in the evening with the delivery of those systems, and with a 1 or 2 demo to the people at the central place, how to use it, how to take some of the precautions so that somebody cannot be injured with a hot water flow, because when during daytime sun is there, it starts boiling. And sometimes there was also a couple of accidents. You know, one of the artisan himself, he was trained in an initial go, and he said that we are making a fool of it, because how water will be heated to that high? You know, there is no electricity, there is no kind of a connection given to this. How it will be heated? Then what he did, he simply put the cold water with the one hand, another hand he just put on the outlet of the hot water. And when that boiling hot water bumps from inside, and the whole of his hand was, you know, totally peeled off, skin was peeled off, and he was in hospital at least for 3 months time. You know, those were the things, you know, then we used to orient people to avoid such things, that there should be a down kind of direction for a cold water, and don't touch it or don't block the exit, because it gives a pressure, pipe can burst, and all those things. They give that demo during the daytime at a couple of places. क्या हुआ? Anything? Yes. सर आपका कनेक्शन लूज हो गया था बीच में। ओके, सो अभी दीपल सिंह जी के टीम में कितने लोग हैं जो ये काम करने के लिए पूरा ट्रेंड हैं? इनकी टीम में 5 लोग हैं। एवरेज उसमें बारी बारी से 3 लोग आते हैं, मतलब जो देख करके बाय रोटेशन दैट एवरीबॉडी गेट बेनिफिटेड, because they are situated nearer to our technology center, which is situated where we are today now. This is right in the village, because it is a nearby place. There are 5, they come one by one or so that it is equally distributed among the benefit goes to the larger section of the group of artists. And initially they used to be only in a household furnishing.
लाइक कोई सीलिंग डालेगा, कोई लकड़ी का खिड़की लगाएगा, दरवाजा लगाएगा, बट दिस इज एडिशनल काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ this group to do something specialized job in terms of technology and to deliver that at the grassroots level for the benefit of the community. And basically they are the warrior, they are the frontline people now, with the development or doing initial display or other things, and identifying the material and shortlisting the material, list of material, developing manual in Hindi, in English, all those things were done by us. But practical way, they are the people. Simply we have to call them. We need 100 system for this village. When will you come? When will you start fabrication? How much time will you take? Because we have this delivery date, you need to adjust it accordingly. This is what they all do. सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी इनके हम मतलब दीपल सिंह जी के टीम में 5-6 लोग ही हैं जिनका डायरेक्ट जीविकोपार्जन इससे हो रहा है। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को और जगह लेके जाते हैं, जैसे आप लद्दाख में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में लेके जाते हैं, या और भी जो डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन्स हैं जहाँ पे जाना भौगोलिक स्थिति से बहुत मुश्किल होता है, या अंदर रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हम किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए करने के लिए सर बहुत सिंपल है, थोड़ा जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल व्हाट आवर कंट्री हैज, बिकॉज एवरीबॉडी वांटेड एवरीथिंग फॉर फ्री, गैस फ्री चाहिए, है ना, घर का हमारे को अगर वाटर हीटर लगाना है तो सब्सिडी चाहिए, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट चाहिए तो उसमें 70% सब्सिडी चाहिए, वी आर फ्रॉम द स्टेट, वी नीड एंटी हेल नेट टू प्रोटेक्ट आवर एप्पल ऑर्चर्ड्स, भाई उसमें सब्सिडी चाहिए। बट मेनली प्रॉब्लम यही है कि वी एवरीवेयर एज एंड व्हेन वी गो, people are looking for some scheme to pitch in to have these systems in different areas. And that area, for example, if somebody, we are ready, we are very open, we are at the grassroots level to provide the knowledge, provide the input, provide the technology. We provide it. We trained artisan, 9 artisans were trained in Zanstar also. And everybody said that we would like to have it, but we can't invest money, we need it free. Then we asked the Sherif Jubir Agriculture University that you pitch in some tribal development program to further empower. Because there is a lot of program available, say, where people, particularly like Dipal Singh, can be trained. And our team, rather Dipal Singh can go to any place to tell the nitty-gritties of the system to the people if somebody is ready to adopt it. Again, in we had a lot of this kind of webinars in Northeast, Uttarakhand. People would like to take these up, but only point is that the pipe is customized, because that is not available in the open market. And we are offering that even if artisan group comes, we can supply pipe, ready-made pipe for them, and rest of the material they get at their places, and let us fabricate. But in Uttarakhand, we have a couple of clusters negotiating where we are giving knowledge, and they will fabricate and they will install in their areas. And it is very simple, sir, for communication. ठीक है सर, थैंक यू। अब इसके साथ हम तो श्रीमती मनी देवी जी के पास जाना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वो इसको कैसे इस्तेमाल कर रही हैं और इस तकनीक के इस्तेमाल से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए। इसको हम सर धूप में रख के इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ज्यादा धूप होती है उस तरफ उसको रख के उसमें फिर पानी भर देते हैं, ऊपर से उसको ठंडे पानी से भरते हैं जिससे गर्म पानी निकलता है। इससे हमारा टाइम बहुत बचता है। जैसे हमारे खेत में काम होता है तो खेत से आते हैं तो हमको गर्म पानी मिलता है जब धूप होती है। अगर सर में बादल हो तो तब तो कम गर्म रहता है, अगर धूप ठीक खिली हो तो गर्म पानी हमको ठीक मिलता है। बच्चे अगर सुबह स्कूल जाए तो हमारे को नहाने में पीछे दिक्कत होती थी, चूल्हा जलाना पड़ता था, लकड़ी लानी पड़ती थी जंगल से, तो इससे हमको अब गर्म पानी मिल रहा है। ऐसे हमारा टाइम बहुत बच रहा है, बच्चे को पढ़ाने के लिए टाइम मिल रहा है, पशु की देखभाल करने के लिए टाइम मिल रहा है, हरी घास लाने के लिए, जंगल के जाने के लिए हमारा टाइम बच रहा है। नहीं तो पेड़ पे चढ़ना पड़ता था, लकड़ी लानी पड़ती थी, पीठ पे ढोना पड़ता था बोझा, इससे हमारा टाइम बहुत बच गया। हमारी सेहत के लिए रेस्ट हमको हो गया, बच्चे की पढ़ाई कर सकते हैं, बुजुर्गों का ध्यान रख सकते हैं। अगर दिन में ऐसे गर्म पानी करने के लिए हमको लकड़ी जलानी पड़ती थी, बुजुर्गों को नहलाने के लिए हमको पानी गर्म करना पड़ता था, चूल्हा जलाना पड़ता था। अब बुजुर्गों को नहलाए 12 बजे आते हैं हम तो हमारे को गर्म पानी मिलता है,
जिससे हम बुजुर्गों को भी नहला सकते हैं, खुद की साफ सफाई कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, रसोई में साफ सफाई कर सकते हैं, भांडे बर्तन धो सकते हैं, सब कुछ। इसलिए हमको बहुत फायदा होगा इस ग्रुप से। प्रॉपर नहीं है उस टाइम पे कैसे यूज करते हैं। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। इससे हमारे बस टाइम की बहुत बचत हो रही है ना, इस बीच हम बहुत सा काम कर लेते हैं, सिलाई कढ़ाई साथ में कर लेते हैं, तो बहुत फायदा हुआ है हमको इसका। जैसे कभी बादल, जैसे आपने बोला कि बादल है उसमें पानी कम गर्म होता है, या कभी बारिश हो रही है, और उस टाइम पे फिर आप कैसे मैनेज करते हैं पानी? ये तो हमको जलाना पड़ता है, उसमें लकड़ी फिर जलाना पड़ता है, उसमें लकड़ी लगानी पड़ती है ना, तब करके तो गर्म आपके पानी। घर में ये कितने समय से लगा हुआ है? हमको 3 साल हो गए, 3 साल तो से लगा हुआ है। जी, तो 3 साल पहले आपके जीवन जैसे चल रहे थे और अभी जैसे चल रहे हैं, इसमें क्या आप महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं? हमारे तो ये हमको टाइम की बचत हो गई, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उस टाइम हम पशु की देख रेख कर सकते हैं, बुजुर्गों का ध्यान रख सकते हैं, उनको नहला सकते हैं, जैसे हमारी खुद की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अब रेस्ट मिल गया हमको थोड़ा, नहीं तो जाना पड़ता था जंगल में, पेड़ पे चढ़ना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी। हाँ, ऐसे होता था। आप और क्या अपेक्षा रखते हैं हमसे? हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं इस तरीके से? अगर इसके लिए हमको टैंकी मिल जाए गर्म पानी को स्टोर करने के लिए, तो बहुत अच्छा रहता। तब तो हम रात तक इसको स्टोर कर सकते थे ना, ऐसे थर्मस टाइप मिल जाए कुछ ऐसे स्टोर करके हम उसको सुबह फिर बच्चों के नहलाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते थे। ये रात को ठंडा रहता है ना, सुबह भी ये ठंडा रहता है, अगर धूप होती है तब गर्म होता है इसमें पानी। तो आपके साथ में देख रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं हैं, ये सब लोगों के घर में लगा हुआ है? हाँ जी, सबके घर में लगा हुआ है। क्या उनमें से मैं किन्हीं को कोई और बोलना चाहेंगे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कैसे किया है? मोर और लेस द सेम ओपिनियन दे से कि भी बोल दिया सब। तो क्या प्रभात जी लाइव डेमो देखना चाहेंगे सिस्टम? जी सर, बिल्कुल देखेंगे ना। तो जी जी आप बिल्कुल। आप मैं बस 1 मिनट बाहर जाता हूँ और आपको लाइव डेमो के लिए अपने फोन से कनेक्ट करता हूँ, है ना? ठीक है सर। जी बिल्कुल। आई एम आस्किंग, आई एम ज्वाइनिंग इट एंड प्रभात जी 2 मिनट जरा मैं कनेक्ट करके लाता हूँ इसको, है ना? जी सर बिल्कुल। हाँ, वो फोन पे शायद थोड़ा सिग्नल इशू है। आई विल शो इट विद दिस ओनली। मैं इसी से ही दिखा देता हूँ बिकॉज इट विल बी मोर बेटर। नहीं कोई नहीं अच्छा एक मिनट। आर यू एबल टू सी प्रभात जी? दिखाई दे रहा कुछ? जी जी दिख रहा है। यहाँ से इसमें पानी डालेंगे, ठंडा पानी, यहाँ से गर्म पानी बाहर आएगा। ऐसे करके हम इसमें डालते हैं पानी। The system is 3 feet by 6 feet. You can just see the inside coil also, and absorber sheet. These are painted black. Outside there are 3 glass pieces. तो आप देख सकते हैं। हाँ डालो। तो इसमें कोई अगर पूछना चाहें आप तो आप पूछ सकते हैं।
इसमें जो आउटलेट है सर, ये जो रात में बोला आपने कि रात में उसमें पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाए, तो वो उसके लिए डिफरेंट तरीके से हम निकालते हैं, वो कहाँ से निकालते हैं? ये नीचे व्हाइट प्लग दिख रहा है ना आपको, ये उंगली लगा हुआ, ये देखिए यहाँ पे टैप लगता है। यहाँ डेमो में हमने टैप नहीं लगाया, हम इसमें डेमो ये जो टैप लगता है यहाँ पे, जहाँ से रात को आप ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है सर? जी जी। दिस इज वेरी सिंपल, उसमें कोई बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव और इजी टू ऑपरेट, इजी टू मेंटेन, और आराम से आप, and if somebody wish they can connect it online also, because they can just put a stopper in a pipeline and connect that pipe at the inlet, and they can just switch on and switch off the, that wheel, properly. They can rotate it to stop the water supply, and control has to be on the supply line. On the exit there is no tap, or there is no blockade over there to prevent the pressure and all. This is something very effective and working very nicely to the need of the house. Yes, many people have been asking for this, that they should have a storage in it. But you put a storage, we will pay for it. But again, I would like to share here, we are in the third phase of core sport program of the DST. Now the program has been renamed as Sunil, strengthening, and some upgrading the innovation and for sustainable livelihood kind of a program on the name of Dr. Sunil, who passed away with COVID, a few months back. And that way, that is a very, very prestigious. The mandate of that third phase, where we have been using different kind of material for fabrication of the frame, replacing wood with some coated aluminum, and also putting insulated tank of 100-liter capacity, so that they can also have the benefit of hot water, what is heated during the daytime when they don't use, and they can use it right in the morning, as she mentioned, for the school going kids or the person who is leaving early to attend some urgent job and all that, and they can be totally free of this water heating hassle. This is how we have been doing. Let's come inside, then again we sit inside so that we can have a and this is the technology center of ours at the in the heart of village, where we have a facility for button mushroom. As Dr. Maninder mentioned, we provide 300 metric ton of compost to almost around 150 farmers annually, to facilitate their cultivation of button mushroom. And we are starting with shiitake mushroom, herbal processing, medicinal plant processing. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you so much for demonstrating the technology also. I'll request Dr. Maninder Kaur if she can tell something. I'm not sure whether she is around. Okay. वो है नहीं शायद, वो डिस्कनेक्ट हो गई है. I think there is some signal issue. Hello. Yeah, yes, she's there. Hello. Yes, ma'am, you are audible. आज आवाज आ रही है और आपका सीन भी आ रहा है. Okay. So, what should I say? Like, what is your question? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे योगदान दे रहा है, इसमें आपका ओपिनियन मैम, और हम इसको और आगे किस तरीके से लेके जा सकते हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल टेरेन्स में. Like, I think conservation of forest is a big issue, because in the today's time, environment, we are talking about climate change, temperature is increasing. So in a big way, I think we need to reduce the dependence of our beneficiaries on the forest.
सो फॉरेस्ट से उनको वो फॉडर के लिए भी डिपेंडेंट है और ये फ्यूल वुड के लिए भी डिपेंडेंट है और एमर्सिंग ऑफ कटिंग ऑफ लाइक these trees is there. So we want that how we can give them better technologies for their livelihood. So their dependence on natural resources that should be reduced. And then there should be the conservation of water also, like water is a free flowing until unless if there is no forest, there will be no water. So we have to see in a larger perspective when we are working in Himalayas. So it is very important that natural resources, they needs to be kept intact, whether they are the forests, whether it's the water, whether any kind of other resources. So people have a lot of dependence on them. So it is very important. Being scientists, it is our as well as every scientist's priority. It should be priority that whatever technologies we are doing, we are studying, it should be at the applicable level. And it should be benefited to the people. लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले. सर यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ. When we formulate this organization, we were all the PhDs. We moved out of the university. Then we thought, why not? Why our technologies? They are always lying in the papers. Why shouldn't we? Because we were from the lab of mushroom cultivations, and so then we begin with the mushroom cultivation and. From our first project, it is wide and large, spread almost all of the temperate zone in Himachal. Then one by one, we taken up different activities. So solar intervention is one of them. So this is how we are thinking. We like, it is not always technologies giving the direct economic benefit. There are always tangible and intangible benefits, direct and indirect benefits. So solar in kind of for these women, it is intangible. But for we as a scientist, I think it has a larger impact on the society and the nature as well as on the globe. So so we have to see it in a larger perspective rather than we minuscule the thing and just for pinpointing that it is just a solar geyser or solar hammam. So on a larger perspective, it is a big issue. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for taking science to this grassroots level, directly to the communities. It is our collective responsibility, and we all together will achieve the success in the taking science to the grassroots. Exactly. Thank you. Thank you. Okay, so with this, I think this is over, and we'll take leave. Thank you, Dr. Lalji Singh. Thank you, Deepal Singh ji. Thank you, Renu Mani Devi. Thank you so much. Thank you, ma'am.